ऑलराइट, मैं भी वापस आ गया। राज, क्या बात है भाई, कितनी जल्दी। ऑलराइट गाइस, वापस आ गया मैं भी, राज भी आ गया, बड़ी जल्दी आ गया राज, थैंक यू ब्रो, अप्रिशिएट इट। हो ओके, बेटर, क्या ये बेटर है, क्या ये बेहतर है? नहाऊंगा, मैं डेली नहाऊंगा। मैं दुनिया में इतने तरीके नहीं होंगे, आपकी वीडियोस देख देख के मैं सारे तरीके से नहाना सीख गया। मैं कहता हूं आप हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंडे पानी से नहाने वाले व्यक्ति हो। प्लीज अब चैलेंज के नाम पे पानी तो मत वेस्ट करो यार। अब दे दो कुछ बॉडी बिल्डिंग टिप्स मुझे। मैं कहता हूं तुम शेर हो, तुम सियाचिन में भी खड़े होकर प्लास्टिक की बाल्टी अपने ऊपर डाल के नहा लोगे। शेर हो तुम, मान गया, खुश, ठीक है। अब बताओ आगे। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे मरना है। भाई डिप्रेशन में ही तो जा रहा है वो, उसको गाली तो मत दो यार। अब कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता। Wait, what? अरे सुनो! Oh my god, that was bad. That was a bad joke. आज दंगल चलेंगे सारे बादाम रगड़ा पीने के बाद, ध्यान रखना। मेरा प्री वर्कआउट ले लिया ना, आज तो बहुत ही टफ डे है, जुम्बा और पिलाटे। और मेरा स्वेट टॉवल रख लिया ना। हां, स्वेट टॉवल। अबे तो आजा, अकेला खड़ा हूं, चुप उसका प्रोटीन पीने वाले तू आगे दिखाना, 4 बर्फ की सीढ़ी में डाल रही। नेचुरल कई बंदे इंस्टाग्राम पे अपना दिखा के रोटियां पता नहीं क्या दिखा। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और जिसको भी आज हमने इस वीडियो में फीचर किया है, किसी को भी कुछ पर्सनली जाके बोलने की जरूरत नहीं है। सब लोग हमसे तो बढ़िया ही कर रहे हैं। अगर फिटनेस की बात करें, बॉडी बिल्डिंग की बात करें, हमसे तो बेटर ही है वो अपनी जगह। और सबसे अच्छी बात ये है कि यार इन लोगों की जर्नी मैंने भी फॉलो किया है। सब लोग बहुत नीचे से मेहनत करके ऊपर। बट ये तो पूरा फिर क्या? ठीक है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लो। आई होप वो भी ऐसे ही लेंगे। और बाकी तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते ओह अच्छा, कुछ हो गया था ना, किसी की लड़ाई वड़ाई हो गई थी ना, कुछ ऐसा कुछ सीन था। ओह बट फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लक्ष्य की वीडियो है, ये वीडियो कुछ पॉइंट्स रख रही थी, लेकिन अब तो सारे पॉइंट चले गए ना। लव व्लॉग नहीं बना रहा क्या ब्रो? नहीं, आजकल नहीं बना रहा। परफेक्ट है भाई, तुम करो वो बेस्ट। अरे अरे मेरे भाई, देखे स्क्रीनशॉट्स? नहीं यार, स्क्रीनशॉट नहीं देखे, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है अभी मेरा। देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हो अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, कुछ रियल लाइफ अपडेट चाहिए तो। और हमारा दूसरा चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, अगर तुम्हें व्लॉगिंग देखनी हो तो। और हमारा तीसरा चैनल जिस पे हम, जैसे ये वीडियो लाइव जाएगी उसके बाद हम लोग रात में सेम डे लाइव आएंगे, किंग्स हार्ट लाइव। सर्च भी करके जा सकते हो यूट्यूब पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। किंग्स हार्ट लाइव पे लाइव बैठेंगे रात में। टाटा। Okay. Biggest red flags on the internet. Let's see. आदमी ने औरत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी वॉल लड़ी, खून खराबा किया, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, सिर्फ साइकिल पे कॉन्टिनेंट्स क्रॉस किए। लेकिन आज की तारीख में आदमी औरत के टेंशन पाने के लिए क्या कर रहा है? खुद को ऑनलाइन ग्रीन फ्लैग बता रहा है। इवन सिंपिंग की हद कुछ इस कदर पार कर दी कि अपना पूरा का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट डेडिकेट कर दिया कुछ को। चाहे कुछ भी हो जाए, I'll always speak because that is the most important pillar of our relationship. कोई कितना क्रिंज होने के साथ साथ स्कैरी भी हो सकता है, वो तुम्हें आज इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, यश कह रहा है भाई मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना है, कौन से चैनल से सीखूं बेसिक्स? ब्रदर्स वाला स्टैंड अप अच्छा है। ब्रदर्स वाला स्टैंड अप कौन सा है? आई डोंट नो। वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए ओके यार, ऑनेस्टली मैं पहले तो कहूँगा कि रिजॉल्व से शुरू कर, पूनम पांडे से नहीं। देखता हूँ कौन कौन से चैनल्स दिखते हैं मुझे एक बार देखने पे। स्टार्ट लर्निंग विद डेविंची रिजॉल्व। आई थिंक जैसे ये चैनल है, हिंदी में है शायद, फुल क्रैश कोर्स फ्री में डाल रखा है भाई ने, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों के अंदर जो है सब ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम है। कुछ छोटी मोटी चीज़ों का फर्क है, जैसे कि आप फ्री वर्जन के अंदर 4K से ऊपर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनल रेंडर। बट मुझे लगता नहीं है कि हम जितने यूजर यूट्यूब के ऊपर हैं, ठीक है, यहाँ पर इंडिया सिलेक्टेड है ऑलरेडी बिकॉज़ वो स्वाइप पता लगे कि ये इंडिया से। नेक्स्ट आपको कहाँ इंस्टॉल, इस बंदे को फॉलो कर ले। सच बताऊँ, मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इस बंदे के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई कोर्स वगैरह मत खरीदो अगर ये लोग कर रहे हैं तो। मेरे ख्याल से कोई खास फ़ायदा होता नहीं है। बाकी तेरी मर्जी है, अगर तुझे इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगे मे भी तुझे खरीदना हो। हाँ, अभी आया था रिकमेंडेशन में जसप्रीत सिंह। ओके, जसप्रीत सिंह, अरे अरे, पुनीत सुपरस्टार का हैक्ड अकाउंट। चला गया यार अब तो। अच्छा सर्च कर लूँ, मतलब तू ये कह रहा है? अच्छा नहीं यार, स्टैंड अप में लगाता नहीं, बट अच्छा ये ओके, हाँ उस दिन लगाना शुरू करता है स्टैंड अप यार। इट रियली फील्स ऑड। स्टैंड अप और म्यूज़िक चलाना ना स्ट्रीम पे अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि एक तो कॉपीराइट इश्यूज़, प्लस मैं इस टाइप के उसका फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा था एक स्ट्रीम करूँ इंडियन हिप हॉप सीन पे, ये मेरे दोस्त ने रिकमेंड करा था, तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दैट टेल मी।
वैसे तुम्हें लड़का उतना ही डरावना और फिशी साउंड करेगा। ये खुद को बताता है द बॉय यू डिजर्व, बट एक्चुअली में ये है द पापा यू डिजर्व, क्योंकि जो बंदे के नाम पे चीजें करके दिखाता है वो सब एक लड़की सिर्फ अपने पिताजी से एक्सपेक्ट करती है। अगर हम लोग के बीच में कभी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई ना, I promise you, I'll never walk out. I will always put myself in your shoes before reaching any conclusion so that I can understand your point of view. अगर कभी आप कुछ ऐसा करते हो जिससे मुझे बुरा लगता है, I will not assume things. I will find a suitable time and come speak to you about it. हाँ, उसके कॉलेज की फीस बता देना भाई जाके, आधे के सेक्शन में अपना नाम लिख दे। हर एक अनाथ लड़की डिजर्व करती है तेरे जैसा अंडरस्टैंडिंग बाप। इस अकेले इकलौते बंदे ने मेरे पूरे इंस्टाग्राम सजेशन फीड पर टट्टी कर रखी है। द बॉस यू मतलब ठीक है, इट साउंड्स वियर्ड एंड सिंपी, बट कुछ ऐसा गलत उसने कुछ खास कहा नहीं अभी तो। आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स टाइप कुछ चालू करो प्लीज़। भाई मैं पूरा निकालूंगा एक इन डेप्थ कोर्स या फिर वीडियोस। तो हाँ, डिजर्व, द प्रॉमिस यू डिजर्व, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मैं समझा नहीं भाई। द एयरपोर्ट क्रश यू डिजर्व, मेला डेट यू डिजर्व, द ब्रोकर यू डिजर्व, द वर्चुअल डेट यू डिजर्व, द एक्सप्रेसिव पार्टनर यू डिजर्व, द जीजू यू डिजर्व। अभी तक मैंने एक बार और देख लूँ शुरू से, क्योंकि अभी तक मैंने इस बंदे की कोई भी ऐसी चीज़ सुनी नहीं जो मुझे सुनने बहुत नेगेटिव लगी हो। हाँ, थोड़ा डिलीवरी ऐसी अजीब सी है, सिंपी सी, बट फंडामेंटली कोई ऐसी उसने बात कही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, I'll always speak the truth because that is the most important pillar of कुछ भी हो रहा है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, राइट? हाँ, तो उसमें क्या गलत है? our relationship. कोई कितना क्रिंज होने के साथ साथ स्कैरी भी हो सकता है, वो तुम्हें आज इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें लड़का उतना ही डरावना और फिशी साउंड करेगा। okay. वो यू डिजर्व, बट एक्चुअली में ये है द पापा यू डिजर्व, क्योंकि जो बंदे के नाम पे चीजें करके दिखाता है वो सब एक लड़की सिर्फ अपने पिताजी से एक्सपेक्ट करती है। अगर हम लोग के बीच में कभी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई ना, I promise you, I'll never walk out. I will always put myself in your shoes before reaching any conclusion so that I can understand your point of view. अगर कभी आप कुछ ऐसा करते हो जिससे मुझे बुरा लगता है, I will not assume things. I will find a suitable time and come speak to you about it. हाँ, उसके कॉलेज की फीस बता देना भाई जाके, आधे के सेक्शन IHH सीन पे स्ट्रीम, हाँ, इंडियन हिप हॉप, हाँ, आई एम प्लानिंग टू डू दैट। हर एक अनाथ लड़की डिजर्व करती है तेरे जैसा अंडरस्टैंडिंग बाप। इस अकेले इकलौते बंदे ने मेरे पूरे इंस्टाग्राम सजेशन फीड पर टट्टी कर रखी है। द बॉस यू डिजर्व, ऐसा कुछ क्या बोला उसने? द प्रॉमिस यू डिजर्व, एयरपोर्ट क्रश यू डिजर्व, मेला डेट यू डिजर्व, द ब्रोकर यू डिजर्व, द वर्चुअल डेट यू डिजर्व, द एक्सप्रेसिव पार्टनर यू डिजर्व, द जीजू यू डिजर्व। जीजू तू पता तू क्या डिजर्व करता है? मेरा अकेला यू डिजर्व, उन्हीं हाथों में रख दूंगा जिनसे तू ये पतोड़ी रील्स अपलोड करता है। द ग्रीन फ्लैग यू डिजर्व। कि भाई कंट्रीज अपनी वॉर डिस्प्यूट सॉल्व कर लेते बात करके, तो हम लोगों की प्रॉब्लम है ना। पापा को फोन करो, हां आंटी कैसे हो आप? आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इसको मैं बाहर कुछ नहीं खरीदूंगा। बंदा छोड़ो मेरी बंदी शर्ट पे मेरे से इतनी फ्रैंक हरकत करने लगेगा, मुझे उसकी अच्छाई पड़ा उतर जाएगा। होता है कोई इतना अच्छा, साले इतनी अच्छाई दिखा रहा है जैसे अभी अगले मिनट बस 5000 रुपए मांगने वाला है गूगल पे। भाई किसी से नहीं तो भगवान से डर यार, भगवान खुद सरप्राइज देते हैं इतनी फेक एक्टिंग देख के। द डेट यू डिजर्व। साला मुझे तो क्राइम पेट्रोल वाली फीलिंग दे रहा है ये, मैं बता रहा हूं अगले मोमेंट पे मार देगा उसको। ऐसे बाल वाले लड़के प्यार कर ले। देख, थोड़ा क्रिंज तो है कि यू नो किसी से वीडियो बनाते हो ऐसे प्रिटेंड करना कि यू आर ऑन दिस डेट, थोड़ा सा वियर्ड तो है। ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टाइल विद नो बियर्ड लुक, प्योर साइको। अभी बेल्टो से मारेगा जाके उसका। भाई तू ग्रीन फ्लैग छोड़, तू ना मोबाइल बेचने वाली वीडियोस बनाएगा, एकदम तेरी पर्सनालिटी पे बेहतरीन जाएंगी। हां बाय, सी यू। मैं बंदे को मैसेज करो, I'm waiting. फीमेल फॉलोअर्स मांग रहा है। एक दिन में इतना क्रिंज मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए देखा, नहीं तो मेरे पास था इंस्टाग्राम पे ब्लॉग वाला ऑप्शन। और इस इंसान का कंटेंट कमजोर दिल वाली लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके क्राइम पेट्रोल वाले टू टू कैरेक्टर सिर्फ ग्रीन फ्लैग गाय तक सीमित नहीं है। ये लग रहा है रोल प्ले भी करता है इसी ग्रीन फ्लैग वाली पर्सनालिटी में। दैट फ्रेंड हु इज फैमिली। आंटी आप घर पे हो? किधर है ये? अभी फोन नहीं उठाता है, अभी तक सो रहा है। मैं बताता हूँ। ओए सुबह हो गई मामू, मैच देखना। इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो तेरा कोई दोस्त बनेगा भी नहीं। और किसी दोस्त के घर में जाके पहले मोमेंट में इतना फ्रैंक होगा ना, उसके घर के 100 नंबर डायल करके तो रैंप पे से उठवा देंगे। आंटी मेरे नींद में मारो। हां, दोस्त की मम्मी थोड़ी और तेरी काम वाली है, उसको महीने की पगार भी देने लग फ्रैंक हो गए। फुल बॉडी मसाज ले दोस्त के घर, फैमिली बन गए। अब कौन सा यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है तू ये? आंटी आप घर पे हो? अच्छा ठीक है, मुझे बस ये पता लग रहा है कि मुझे रोस्ट कंटेंट, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रोस्ट कंटेंट, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। बात तो सही है वैसे, टू गुड टू बी ट्रू वाली रील्स हैं, मैंने देखी हैं एक दो। हाँ, बट यार ये तो ज़्यादातर कंटेंट ऐसा ही होता है ना, टू गुड टू बी ट्रू। मतलब सारे पूरे टाइम सच बोलने थोड़ी आते हैं। ये जैसे मैंने एक रील ऐसे देखी थी समरन और रफ्तार की कोई, तो दे आर जोकिंग अलॉट, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, दैट्स द पॉइंट। गेटिंग रिच / सक्सेस इज लक और हार्ड वर्क, इट्स बोथ, इट्स नॉट वन और द अदर। एंड रिच / सक्सेस, आई डोंट अग्री विद दैट स्टेटमेंट और द क्वेश्चन। नीलेश भाई आंसर कर दिया मैंने। Hi. 3 steps used by divorce lawyers to destroy a marriage. Better call Amish की वीडियो देख सकते हैं। By which divorce lawyers take a small problem and escalate into a destroyed marriage. Often I've seen this happen because I've consulted a lot of wives myself, and I have also done a lot of matrimonial legal work. And I've seen a very, very common theme that comes across almost in all interactions, and how this thing, not because of some deliberate effort by the lawyers, but by the design of things of the legal system in this country, matters escalate from the smallest of issue into a full-fledged divorce. Time immemorial. You're backtracking a lot. Because देख, मैं ऐसे यूजुअली ज़्यादा लोगों को नहीं बोलूँगा, बट बिकॉज दिस गाय इज अ लॉयर, सो दैट्स व्हाई आई विल बी ओवरली क्रिटिकल, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द टाइटल सेज 3 steps used by divorce lawyers to destroy a marriage, जिसमें क्लियर इम्प्लीकेशन है, राइट, कि लॉयर्स ये स्टेप्स यूज़ करते हैं तुम्हारी मैरिज ख़राब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट नाउ ही इज सेइंग कि ऐसा वो लॉयर्स नहीं करते, लेकिन वो लीगैलिटी ही ऐसी बनी है, हमारी तो क्या गलती है? Not because of some deliberate effort by the lawyers, but by the design of things of the Wait, legal what? system in this country. But that's not what your title says. Matters escalate Implies, I should say. from the smallest of issue into a full-fledged divorce. Time immemorial, you have disputes between spouses where the spouses have to spend a little time away from each other. In India, if there is a dispute, the wife, for a few days goes off to her parents' house. Here, there will either be a lawyer or a law student relative, or there will be a relative who has a lawyer friend. And this person says, why not get an understanding of your legal rights? Why not go and talk to this lawyer? And this is where the saga starts.
तो नहीं, दिस इज क्लियरली एक लॉयर, दिस इज क्लियरली एन इंस्टेंस जो इसने अभी एग्जांपल दिया विच इज कोरिलेटिंग टू दिस बट नॉट विद व्हाट ही सेड हियर. अच्छा, I'm just fucking with him. By the way, you guys know, right? I'm just fucking with him. मजे ले रहा हूँ मैं. Clickbait at its peak. But हाँ, see, now he's saying something that goes along with his title, but not what he said a minute ago. क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि नहीं तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें अपने राइट समझने चाहिए, तो वहाँ पर तो लॉयर ही वो चीज़ यूज़ कर रहा है ना, मैनिपुलेशन टू गेट हिज बिजनेस. Why I'm asking this question is because I'm uploading a lot of chess videos, but my channel is not blowing up, so I think luck is also very important. It is. Replying late because I'm traveling. Okay, bro. Chale, gentle, मेरे भाई. The first thing that the lawyer will say Travel is safely. get the husband on the negotiation table, because there has been lack of communication, there has been breakdown, maybe there is a certain difficulty that the wife is facing with the husband or her in-laws, and in a lot of situations there could be full-blown dowry harassment, domestic violence, whatever the case may be, whatever grievance, no matter how small or large. The lawyer always says that in order to get the husband and his family members to the negotiation table, let's go and file a criminal complaint against them. And the lawyer explains that even if, say for example, the wife says, I do not want to pursue any criminal remedies because this will lead to a complete breakdown of my marriage and I do not want to get divorced, the lawyer says that when you file this complaint before the police station, the police will not automatically register an FIR, nor will the husband or his family members be automatically arrested because of this. The matter will only go to the crime against women cell from the local police station, and it is there that the crime against women cell will call both parties for an amicable handling of the situation where either the wife goes back and starts living with the husband, or there is an amicable break apart where you will, as the wife client sitting in front of me, you will get a substantial sum of money as settlement amount, to which even then a lot of times. तो ये सारी चीज़ें क्लियरली लॉयर कर रहा है. This is not के this is how the legal system is set up के ये तो होने नहीं. Lawyer is doing that out of his own self-interest. A wife says, I do not want to break down of my marriage, I just want things to continue, but I need to have a discussion with the husband and his family members, and because of whatever. For this, I'm feeling very depressed. For this, you're feeling very depressed. Makes sense if you're uploading a lot of content, if it's not blowing up, but maybe you want to change your approach a little. Hai na? If it's not working, why do the same thing? Reasons there is a breakdown in communication. Now, once the wife client of the lawyer now agrees to drafting of this complaint, she doesn't understand to what extent the allegations will be there. And when she sees the first draft of the allegations against the husband and his family members, it is full of concoctions and exaggerations on most days. And the reason why, again, divorce lawyers have to explain this to the wife client, that if I don't do this, and if things do not, in the later stages, if there is no resolution, what is going to happen is that the police might not even register an FIR. And even if an FIR is registered, there is going to be a big possibility that the police might not do anything, or getting anticipatory bail for the husband and his family members will be very easy because of the not so severe allegations. Because the courts of law also expect that if the person is actually guilty of even the smallest thing, he will face the repercussion after a fair trial. But if you want to have a husband go to jail maybe, or to at least have the fear of going to jail, or if you have to, if you want the husband to fear having to pay maintenance, or maybe say a residence order against him, you need to have strong enough allegations. And this is step 2, where the wife is, without her willingness in entirety, consenting to drafting and filing of a complaint against the husband and his family members. And step 3 is when the husband एक second. strong enough allegations. And this is step 2, where the wife is, without her willingness in entirety, consenting to drafting and filing of a complaint against the husband and his family members. And step 3 is when the husband is नहीं, she is consenting and she is willing to consent. Once again, the point is that maybe the lawyer is manipulating her. That is a different thing, which again goes back to the consent thing, if that consent is valid. But again, this is the lawyer. In this case, in this example, the lawyer is the one who's doing the manipulation. It's not the legal system. It's the lawyer जो कि self-interest में काम कर रहा है. Is the lawyer who's dehumanizing the person. It is the lawyer who's manipulating the lady to get business out of her at the cost of her marriage. finally called to the crime against women cell to face negotiations and this amicable settlement. It is at that point of time that the officers at the CAW cell quite often intimidate, threaten the husband. And mind you, CAW cell proceedings are always meant to stretch out to a minimum of 4 to 5 hearings, no matter what. Even if the husband and wife are ready to go back on the first date, the CAW cell will say no. First, we want an ample discussion on whatever is going on over here. And on the first and the second and the third date, That's probably for the better. अगर कोई बात वहाँ तक पहुँची है ना, तो ऐसे नहीं ओ सॉरी हम गलती से आ गए. कोई बात अगर वहाँ तक पहुँची है तो 3-4-5 बार तुमको करना है. That makes sense to me. the husbands are amply threatened, intimidated by the CAW officers. And around that point of time, That doesn't make sense to me. That's not wife good. goes back and discusses with the lawyer, because lawyers are not allowed in CAW meetings, in these conciliation settings. The wife goes back to the lawyer and explains that the husband was terrified and that the CAW cell officer was completely on her side. It is at that point of time that she's already invested in this 3-step process, where the lawyer then tells her that it is far better for you to now go for a divorce and claim a huge amount of money, because in any case, when your husband reads the allegations that you have put against him and his family members, it will be very difficult for the two of you to continue this marital relationship. And because of the investment already made by the wife in terms of money, in terms of effort, in terms of signing on the lies concocted by the divorce lawyers, it is at तो why would he even say कि lawyers ऐसा कुछ गलत नहीं करते, ये तो legal system ऐसे बना हुआ है. अब सही है. So why would he even say that?
this stage that the wife feels very, very helpless and agrees to. I don't know anything about content creation, but I would say just combine the best things of Agadmeter, Gotham Chess, Roseman, even Daniel and Hikaru. मुझे लगता है भाई I really like Gotham Chess actually, and make content in English. True. Pushing for a settlement through a divorce rather than going back home to her husband. It is very sad, but unfortunately, this is something that lawyers themselves are also bound on because of the fact that if we break down all these steps, if there is no complaint filed, there is no calling the husband or his family members on the negotiation table, if the allegations are not severe, as earlier mentioned, if things do not get compromised, you will have a weak complaint because of which there will be easy grant of bail and also, in all probability, an acquittal as well. And on the third step, if the lawyers are not bound, the CAW officers are not threatening and intimidating, then in that situation, the husband will not feel the slightest bit of fear or threat in his mind. But simultaneously, because there is an actual possibility that the husband, after reading the complaint, will not agree to going back to living together with his wife. तो lawyer was not bound to do that to begin with. अगर उस बंदे को करना ही नहीं था, तो lawyer is not bound to do that to begin with. Lawyers are right in saying that if the husband does read it, it's going to be a problem. And this is a 3-step method because of which lawyers... Yeah, but you are the one who made me do it. Despite having the best intentions. How does the lawyers have best intentions here? Okay, I think he didn't make his point clear. हो सकता है. It's like उसने एक take में video बनाई almost like that. I think what he's trying to say, what he said is कि बंदे की लड़ाई हो गई, बंदी अपने घर जाके रह रही है कुछ दिनों से, जिनमें से तो खानदान में कोई एक लॉयर है, लॉ स्टूडेंट है, तो वो कहता है अपने राइट्स के बारे में पता करने से जाता ही क्या है. और फिर लेडी चाहती भी नहीं है कंप्लेन फाइल करना, बट वो कहता है कि अभी कंप्लेन फाइल कर दो वरना बाद में इतनी बड़ी कंप्लेन फाइल कर नहीं पाओगे, और ऐसी बातें बोल के उससे कंप्लेन फाइल करवा देता है. तो वो गलत इंटेंशन तो थी ना ऑलमोस्ट. Okay, maybe गलत intention नहीं थी. Okay, I see it now. Maybe गलत intention नहीं थी. Maybe just lawyer just trying to make sure she is safe no matter what. I don't think people are that good generally. Especially जब incentive है तुम्हारे पास कि तुम्हें यहाँ से profit आएगा, कि मैं तेरा भला कर दूंगा. कैसे? जो काम मैं करता हूँ उस काम से, और उस काम का तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा. देख मैं तेरा कितना भला चाहता हूँ. No, that's not how things work. You're not being better. You're not being good. You're not being morally good. You're manipulating someone into destroying their marriage. To win a case जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ. You're doing that to win a case जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो केस जो कि तुम शुरू करवा रहे हो. Wow, what's up लक्ष्य? क्या हाल है? In the smallest of situations, they create a mountain out of a mole and they effectively lead a marriage to the path of complete destruction. And क्या कहते हैं कमेंट? If a lawyer has to intervene to resolve marital issues, the marriage is already over. A good analysis by Amish. Lil drunky. All right. Moral of the story, never go to lawyers for fixing marital problems. They are incompatible to solve marital problems. Any lawyer reading this comment, don't take it to heart. Your profession is bad omen for marital issues. That is true. Don't go to lawyers. Maybe go to a therapist, but don't go to lawyers. Instead of going to your lawyer friend, go to a marriage counselor. Again, a lawyer has no background to fix a marriage. Not a background. Incentive, mere bhai. Fixing a marriage is not a legal thing. Not even a legal thing. They're incentivized to destroy the marriage. See, I opened your stream after getting drunk. See, I love you guys. We love you, Lakshya. Hey. ये रणवीर अलाहाबादी दिखा था मुझे भी यार. So you don't have time to consume an entire podcast. That's okay. Enjoy the highlights on PRS Clips. Make sure you subscribe. Make sure you hit that bell icon. पता नहीं मुझे हमेशा रणवीर अलाहाबादी के इंट्रोस देख के ऐसा लगता है he's trying to fuck me. Look at him. So you don't have time to consume an entire podcast. That's okay. Enjoy the highlights on PRS Clips. Dude, come on, man. What I loved about it was that you made it from a very neutral perspective. You weren't siding with men or women on it, and I recommend everyone go watch that documentary. We'll link it down below. But maybe some context on that documentary is IPC 498A. What is it? Especially from the Indian context, I'd love to hear it from you. In many ways, you've kind of made it a That's gay. तो क्या हो गया? massive part of your life. Yes. What is it? What does it mean? What does it mean for Indian men specifically? Because that's our primary audience. We'd love to hear it. So I would love to go a little bit into the background of this, Ranveer, and I've been very vocal about this. Majority of people, whosoever get to know about my work, the biggest question is why? Why would a woman do this? Because it's a fact that women have suffered, women suffer, and there's so many women who go through wrongs at the hands of men. So for a woman to talk for men is quite a something that people find it hard to accept. Why it started is I was absolutely unaware of this realm, and I was working as a journalist with a company called Exchange for Media, and I personally went through this experience where the marriage in my own family broke down because the woman was at fault. I don't want to delve too deep into this, but we had very, very strong evidences to prove that it was not a case of dowry, it was not a case of domestic violence, it was a case of adultery by the woman. And we had solid evidences in our hands.
But when the marriage, when it was decided that that there would be a mutual consent divorce, the other side withdrew that, and then they heard allegations of dowry demand, domestic violence, and choking the woman. I was dumbstruck. Like I was like, how can somebody lie through their teeth like this? And when I started talking to people, like I knew there is issue of dowry, immense issue of dowry demands and domestic violence due to dowry in India, but I did not have any clue about this side of the world, that the laws misuse, Life misuse is of laws and beautiful. things like that. So when I started talking to people, what came out was very, I would say, distressing. We were told, you'll be accused, there'll be FIR filed on you, there'll be a criminal case filed on you. No matter how many evidences you have, you'll have to suffer for 4-5 years, and only then your side will come to a hearing in the court. Until by then, you will be arrested, your entire family will be arrested, old parents would be arrested as well. And the woman has real upper hand in these cases. And I was like, this is not okay. This is just not okay. The laws should be there to protect women, but if they're going to use that as a weapon against the man and his family, that's absolutely wrong. So that's when I decided to make Martyrs of Marriage. Now, what is IPC 498A? The law was brought in the aftermath of a lot of dowry deaths that happened in the 80s. There was this new law that was brought. हम भाई अभी वही समझ रहे हैं जो लॉस हैं. अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये इस बारे में थी नहीं स्ट्रीम, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉज जिसकी श्वेता बात करता है, जिसकी बेटर कॉल अमीश बात करता है, एंड हाउ कोर्ट्स आर यूजुअली बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन. आई हैव बीन सेइंग दैट सिंस डे वन कि कोर्ट्स आर बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन, बट दैट डजंट मीन वो स्पेसिफिक लॉ जिसकी वो बात कर रहे थे वो गलत है. But let's see what we get to see here. Criminalizes demand of dowry or mental or physical cruelty on a married woman by her husband or his relatives. And the cruelty is to the extent which drives a woman to suicide. But what started happening was any dispute, incompatibility, the guy is not earning much, the woman is not able to stay with the relatives or the in-laws, she wants an independent place, she doesn't like staying with the in-laws, or she falls in love with somebody else. Myriad problems, one solution, put a IPC 498 on the husband, and then his trial begins. I also believe the law is pretty wide in terms of they categorize actual physical violence from the man in the same category as something very soft, like just an argument. It will be looked at in the same way. Absolutely. And that's the actual core of this problem. See, the whole thing is, Ranveer, it doesn't take anything in India to put an allegation, especially in crimes against women, on the FIR. And then the man has charged. Okay, I'm just playing the devil's advocate. मैं थोड़ा सा काउंटर ओपिनियन सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट isn't that what the court is there for? कि इवन तो ठीक है तुमने एक एक्ट में डाल दिया उसको, एक उसमें डाल दिया तुमने उसको, लेकिन कोर्ट का काम ही तो ये है ना कि कोर्ट देखेगा कि अच्छा ये उस एक्ट में तो आता है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है, right? Under the IPC for every allegation But again, the issue is courts are usually biased towards females. that you make. The cases are not investigated at the initial stages. While people say that FIR is just a first information report, but a criminal case and an FIR means a lot. If the person is in a government job, he has immense repercussions. If he's in a private job also, he has immense repercussions. The reason I made Martyrs of Marriage was that when this happened with us, there was a lot of, again, like you said in the beginning, mental health issues that, cropped up in the family. My brother went into depression. My father went into depression. And that was very difficult for me to deal with. I was kind of a strong pillar standing over there, dealing with everything. But it pained me to see us suffer because of something like this. So I have seen in my personal life an attempt to suicide very close because of these issues. What triggered me to get into this space was when something like this happens. Abhi bhi India mein divorce is still a taboo. In middle class families, in lower middle class families, किसी का divorce हो रहा है, that means immense social shame. और ऐसा case लग जाना तो मतलब you cannot imagine the kind of trauma that parents go through. And I realized that a lot of people have ended their life because of being implicated in a false case of dowry. And my only intention was I wanted these suicides to stop, while of course bringing awareness on the law misuse. Because सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है when you're into this situation, you feel stuck. Your own family members distance. Again, the stereotype. आदमी ने कुछ गलत किया होगा, नहीं तो ऐसे औरत कोई केस नहीं करेगी. But that's not true. I just want to add 2 pieces of context here. Sure. The first is all forms of suffering should turn into purpose, and that's the only way suffering should be looked at. So, firstly, one thank you on behalf of every man out there. Second, thank you before as well. I need to do it again. You don't know what you're doing for a lot of men. Secondly, in the documentary, there was this one part where you brought on a lawyer called Miss Mrinalini, I believe. Yeah. Who said that she's a divorce lawyer, I believe, and she's fought on behalf of men and women. She's an experienced lawyer, and she said that basically what she has noticed is that 498A, especially this section, is often kind of turned against the man. Yeah. Again, she didn't quantify, she didn't put how many number of men have to suffer because of this, and this is taking nothing away from the women who rightfully use 498A. But in the current scenario, according to the laws of our country, too many men are suffering because of this situation. So, I hear you, and I hear your pain, and I feel it as well. I still believe that, and maybe this is breaking away from podcasting with you and just meeting you as a person. Do you look at it from a sense of purpose, that like when you look back at the situation, do you understand what you're doing for Indian men out there now? And maybe you had to go through that difficult moment of seeing the people closest to you go through what they had to go through, but then ensure that other men and women after you don't have to go through those situations. It definitely came as a sense of purpose, and since it's a long form, because the situation at home was so distressing, I did this course called Landmark Foundation. No promotion, but it changed my life quite a lot. My parents did that, my brother did that, and in the completion of that program is a community project. So Martyrs of Marriage was born out of that I want to do something for the community. So of course it came from a sense of purpose. It was not about me anymore. It was about other people and saving lives. When I had taken, I was working with Exchange for Media, and my boss, Mr. Anurag Batra, he's quite a known name in the media world. I told sir that just give me 1 year. This is very important. I really want to do this. I want to take a break from the job. I'll finish this documentary and then I'll come back. This is 2012. We're in 2022. Talking about men, working on men's issues is an extremely, and I cannot stress how difficult of a task it is, Ranveer. There are no perks. It's a very, very difficult financial journey.
you have to struggle to get even a penny to do the work that you want to do. So I don't think there is anything else but purpose which has driven me this far. Every day people ask me like, men also don't do this much for men. How come you every day? And I tell them that the kind of blessings that I receive, and now a lot more women are also coming and saying, we really want to join your journey because we are seeing so much of men suffering around us. A lot of mothers who bless me, a lot of sisters who say, you showed us the right path. I could save my brother. A lot of men, of course, they understand. So I don't think there is anything else but purpose. And I think the larger purpose is that men have a space where they can open up. They can talk about their vulnerabilities. They can talk about what they're going through without thinking this person is going to judge me. This person is going to see me as a weak man. This person is like, यार क्या आदमी है तू अपनी औरत से सब वो हो रहा है, harass हो रहा है, कुछ कर नहीं सकता, कैसा आदमी है. These are the common things that you would say to a man. So the idea is for men, if they're going through something, to speak up. And secondly, bring about a change in the system where men are not presumed guilty and they're not punished from the word go when a woman complains against them. Or stronger laws. Very, very strong laws to punish the misusers, and also laws that could give some relief to the man. Not going too much into the depth, but just yesterday there's a man in Bhopal, just a 22-year-old guy who ended his life, leaving 3 suicide videos, saying, "Kuch कानून तो आदमियों के लिए भी बना दो." He had gotten married just 4 days ago. I don't know what happened in his life. Haven't investigated the case, but this is what he said. These were his last words. And this, of course, is not just the case. I've made this documentary, India's Sons, on false rape case victims. There's a suicide case in that also where Arvind Bharti said that, a man is presumed guilty, a man is born criminal, and the justice system is just so against men. And like I said, always, IPC 498A was brought in 1983, very stringent law. People used to get arrested immediately and all of that happened. 30 years down the line, in 2005, Supreme Court called misuse of IPC 498A as legal terrorism, And then in 2014, some guidelines were brought in to prevent immediate arrests. Then in 2017, again, Supreme Court said that, people are just not stopping misusing this law. So a law brought for a purpose needs to solve that purpose. And if it's being misused, it just loses its purpose. Unfortunately, that is now happening with rape laws. And that's why I made India's Sons. Because rape is such a heinous crime. You cannot afford to make a mockery out of it by having false allegations. And unfortunately, there are just too many. Alright, we gotta do some more digging. थोड़ी चीज़ें समझ an overview of the history of grape laws in India. Let's see. What do we have? Let's see. कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है. It's not too much. थोड़ी सी reading है. ज़्यादा नहीं है. Not bad. Alright, sorry but अवेला नहीं. हाँ ठीक है. No chat, guys. You guys are completely against this whole topic? Or what? Just trying to put some music on. Lo-fi chill. Seems interesting. देखते हैं और क्या क्या मिलता है. इस छोटी सी हाईलाइट से द रणवीर शो की कुछ खास मिला नहीं. देखते हैं. Maybe we can find something on our own. इशू इज ये कहना ना, मैं ये चीज़ शुरू से कह रहा हूँ कि कोर्ट्स आर biased towards women. That's true जहाँ तक मैंने सुना है. However, that doesn't help us in any way. Like, okay, what are we supposed to do about that? अगर biased हैं तो कितना biased हैं? How much proof can you bring in? How much proof are you even allowed to bring in? How much proof are they looking at? But a little higher to enjoy it. एक सेकेंड guys. The word grape बोलूँगा मैं, पूरा नहीं बोल सकता. अपरेंटली मुझे बोला मेरा चैनल बंद हो जाएगा अगर मैं ढंग से बोलूँगा तो. So I'll try to be conservative. अब मेरी आवाज़ थोड़ी बेटर आ रही होगी, I hope. Alright. The word grape is not new to the world. It has been very much prevalent since the ancient times. Grape can be defined as the most barbaric and gruesome act which violates the bodily integrity and honor of a woman.
it is considered not just why only a woman? Why would you say a woman? It is not just considered as just an act against the woman, but also humanity as a whole. It has been seen in so many cultures, such as Roman, Greek, and Indian cultures, even though most of the cultures had recognized rape as a crime. It was a pervasive theme in myths and legends. The idea of punishing the offender of rape had also come into picture during this time. The medieval era has also witnessed the concept of rape and its punishments. The modern era has adopted penal norms to punish offenders. In India, rape is considered the most widespread crime, and it's increasing day by day. In India, the British East India Company first set up penal norms to the Indian Penal Code was enacted in the year 1860. Over the years, many amendments have been made to the IPC, especially regarding the rape laws. The article discusses the various changes that have been made in rape law since 1860. IPC 1860. The history of rape laws in India begins with enactment of the IPC 1860. Section 375 to Section 376E of the IPC refers to sexual offences. Rape in the IPC is defined as sex without consent, with consent but under the fear of death, or consent under the oh my god, oh shit, why the fuck are we discussing this even now, जब ये 1860 से clear लिखा हुआ है pretense के बारे में. Oh my god, why are we, oh my god. Also, we need to understand not every not guilty verdict indicates that the case was fake and filed in bad faith. True, it can also mean that investigating was sloppy and accused got off due to lack of evidence. True, gentle. सही कह रहा है. बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रीटेंसेस की बात 1860 से हो रही है हमारी कंट्री में, तो अब ये क्या दिक्कत हो गई अचानक से? Alright. It also defined the statutory. What does this mean? I don't know. Required, permitted. Alright. Statutory rape as the rape of a woman who are below the age of 16. Sex without consent between married couples, marital rape, was not recognized in the IPC and continues to remain unrecognized by the court. Wait, what? Marital rape continues to remain unrecognized by the court. Alright. That's horrible. The punishment for rape were made as lenient as 2 years. Gang rapes and repeat offenders were also given harder punishments. Alright. In 1983, सीधा 100 साल का जंप मार दिया हमने. 120 बल्कि. Right? Yeah. Dramatic changes happened in IPC happened in the Indian Penal Code, happened with the Mathura rape case. Tukaram and Antarvi State of Maharashtra versus State of Maharashtra. In the year 1972, a 16-year-old Adivasi girl named Mathura was allegedly raped by 3 drunk police officers while in custody. Upon encouragement from her family, she filed a case against the police officers. The lower court acquitted the police officer, and it was held that the girl is of loose morals. Alright. On appeal by the Bombay court, the Bombay court reversed the findings of the lower court. On further appeal, the Supreme Court overturned the judgment by the Bombay High Court and held that Mathura did not raise an alarm, or nor did she have any visible injury on her body, thereby indicating that she did not resist the advances. The court also held that because she was used to sex, she might have incited the cops to have intercourse with her. This led to a wide uproar in the country. Lawyers believed that the court, instead of relying on hard evidence, let the cultural taboo of premarital sex influence this decision. That can totally happen. The submission during rape was misunderstood as consent. All right. Because of this taboo, women groups form all over the country held protests demanding a change in the law. In the year 1983, a change was made to the section 114A of the Indian Evidence Act. A new category of rape called custodial rape was introduced to include rape of women while in custody of public servants. This amendment made consent an integral part of rape. Alright, and that court should be presumed that the woman is saying the truth when she says that there was no consent. Alright, this amendment also banned publishing the identity of the victim and prohibited the character assassination of the victim in court. Alright, makes sense. It makes a lot of sense, actually.
However, this is going जो ये है कहाँ गया include rape of women while in custody public events. The amendment made consent an integral अच्छा in the custody of public servants. This amendment made consent the integral part of the rape, and the court should presume that woman is saying the truth. I think हमने कहीं और पढ़ा था कुछ streams पहले कि ये court is going to presume that woman is saying truth. It was in relation only to, you know, when she was in custody of public servants. A PIL, ये 2002 में, a PIL filed by an NGO named Sakshi pointed out that cross-examination of the victim was still being done and the victims were not comfortable reporting the rape. Wait. This was because the main intention of the defense is to question the degrade the sexual integrity of the person or the personal space of the victim instead of treating them with empathy. It was in this light that the Supreme Court asked the Law Commission to review the rape laws. And they concluded that Section 155(4) of the Indian Evidence Act was clause that prevent rape victims from reporting rape. They believe that the defense lawyer should still be discredited the testimony of a rape victim and claim that she is of immoral character. ये मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया. They believe that the defense lawyer could still discredit the testimony of a rape victim, all right, and claim that she is of immoral character. This clause was amended in 2002, after which the cross-examination of the victim was banned. अच्छा, by the way, I can see मेरे ख्याल से we can find some things जिसमें देख के ऐसा लगे कि oh this is going too far, but I think we can clearly see जिस तरीके से जो changes आ रहे थे पिछले 200 सालों में या फिर actually पिछले 20-30 सालों में, it sounds like all of them are trying to fix one problem. Protection of Children from Sexual Offences, POSCO Act 2012. अच्छा 2012 में आई है. All right. Over the years, there had been an increase in child rape cases, and there was a dire need to bring in a new legal procedure to deal with child rape cases. Till then, child rape cases fell under the statutory rape, which criminalized sexual intercourse with a girl below the age of 16, with or without the consent. All right, yeah, because the consent wouldn't be valid, I presume. The POSCO Act took note of the special conditions under which the child could be tried, such as making the police responsible for protecting the child during the trial and providing the emergency medical treatment. The Act also mandated that the case must be fast-tracked within a year. The Act is gender-neutral and is also made child pornography abatement. What does that mean? I don't know. Of child sexual abuse, non-penetrative assault, and sexual harassment of an offense. All right. Makes sense. Criminal law. And 2013. On December 16, 2012, a 23-year-old physiotherapy intern was brutally gang raped in a moving by. All right, we all know about the story. In Delhi, she succumbed to her injuries and on 28th December 2012 at a hospital in Singapore. The brutality and violence led to the widespread protests all across the country. People all across the country were demanding change in the law. This was turning point of all the rape laws in India. It was not just an issue about violent crimes, but it was also a women's right issue. In the light, court decided to extensively review the criminal laws prevailing in the country. They realized that the crimes such as voyeurism, I don't know how to pronounce this, stalking, acid attacks, etc. are missing from the legal framework. Holy fucking shit. Who would have known? In order to ensure that a case like Nirbhaya doesn't happen again, the government of India appointed the Justice Verma Committee in order to recommend various amendments that are needed in criminal law. All right. And the committee was also asked to provide a process for quicker trials in rape cases and other cases related to crime against women and provide harder punishments. ये मेरी आवाज़ बढ़ती जा रही है गाने की, मुझे ऐसा लग रहा है ना? मुझे खुद ही बहुत तेज आ रही है.
भाई गाने बदल देता हूँ. The committee made the following recommendations. Various events that are needed in criminal. The committee was also asked to provide process quicker than the rape cases and the other cases related to crime against women and provide harder punishments. The committee made the following recommendations. Rape should be treated as a separate offense and should not be limited to penetration of the mouth, vagina or the anus. Any non-consensual penetration of sexual nature should be considered as rape. राइट शोल्डर ठीक नहीं हुआ. नहीं यार शोल्डर ठीक नहीं हुआ. धीरे धीरे बड़ी तो है आवाज़. हाँ आई थिंक आवाज़ वो ही ऐसा था. खैर मेरी आवाज़ कौन सी अच्छी है. नॉन पेनिट्रेटिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ सेक्शुअल कॉन्डक्ट वुड बी ट्रीटेड एज सेक्शुअल असॉल्ट विच वुड बी पनिशेबल विद 5 years of imprisonment or with a fine or both. The rarest cases of rape would invite the death penalty. The age of consent should be increased from 16 to 18. All right. The recommendations of the committee were accepted by the legislative body, and thus Criminal Law Amendment Act 2013 was enacted. Though this act, even a threat to rape is considered a crime. Through this act, even a threat to rape is considered a crime. Section 350 has been added to the IPC, which describes sexual harassment and punishment. New offences such as stalking, voyeurism, and acid attacks were added. The amendment also mentions that the characters of the victim is irrelevant and the past sexual history of the woman cannot be used as evidence. True. Makes sense. The minimum sentence of rape was changed from 7 years to 10 years. In case where the victim dies, the offender will be punished with life imprisonment or a death sentence. People protested in large NOS when Nirbhaya happened, and also numbers. And also when one doctor in South was raped, there is criticism that people only protest when the victim is middle class because it makes them. I was even a part of a protest rally, or two actually. भाई मैं तो कतई मतलब दिल्ली से चिपक के रहता हूँ ना, तो it was an extremely big deal here as well. Feel that it can happen with them and their loved ones. Do you think this criticism is valid? To a certain degree yes, क्योंकि जितनी भी हमें कॉमन चीज़ें दिखती है ना किसी के साथ, उतना ज़्यादा हम पर्सनली फील करते हैं. अभी मैं ये बहुत ही ऑफ टॉपिक से साउंड करेगा, लेकिन I was just listening to someone talk about death of a relative, and he was talking to someone. The point, actually I felt the same thing. तो इंसान ने बिल्कुल ही सेम चीज़ बोली. Basically he said कि when someone very close to us dies, that makes the reality of our death much more prominent, है ना. क्योंकि when you hear कि अच्छा वो एक्टर मर गया, it's like oh someone you knew just died, but then one day your friend dies. Fuck. इस मामले में फ़र्क ही क्या था? We were just two random people, right? All of a sudden the reality of your death is much more prominent. So I think something similar can happen here as well. मैंने भी एक वीडियो बनाई थी. Okay, all right. 2012 में. One of the accused was a minor, so the age of being tried as an adult for crimes such as rape and murder was changed from 18 to 16 in accordance with the Juvenile Justice Act. Okay, so you cannot provide consent to someone who's under 18, but you can commit rape if you are 17. Okay, all right. That makes sense, yes, to be honest. Criminal Law Amendment Ordinance 2018. In 2018, an 8-year-old girl was raped. It's just... and killed in Kotha district, Jammu and Kashmir. Kathua. Sorry. The man accused was a priest of a temple. This led to a wide outrage in the country. 3 months later, an ordinance was passed by the government to legally address the crime. Changes were mainly made to the POSCO Act since it was against a child. Rape of anyone below 16 years of age was punishable by a minimum of 20 years, whereas the rape of anyone below the age of 12 invited death penalty. It is also altered the fast track clause from 1 year to 6 months. Oh, तेरी भैंस का नहीं, not bad. नहीं 2021 में, 2012 में थोड़ा ज़्यादा छोटा था. Oh, okay. किस चीज़ पे वीडियो? Okay. Conclude. अच्छा, इसमें अभी हमको कुछ भी ऐसा नहीं मिला. Right? The legal system should be the link between the state and the citizens. Therefore, the government needs to take necessary steps and protect the citizens.
In terms of the protection of women in this country against various offenses, India has come a long way, but it still has a long way to go. It is important to keep the laws under check to make sure that it doesn't violate the rights of any individual. Aman bhai, size doesn't matter. It's how you use it. अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं एक बार. इसमें से इज देयर समथिंग आई वांट टू टेक अवे फ्रॉम. आई थिंक इसमें दो नहीं 3-4 बड़ी चीज़ें थी वैसे तो. एक तो 83 वाला द मथुरा ग्रेप केस एंड 2012, दीज वर द बिग थिंग्स राइट. और 2018 में भी क्या था ये एक, I'm not sure. I almost feel like I should write this down somewhat, but I'm not gonna. Let's see. बाकी देखते हैं. ये क्या है? 498A IBC case. Initial signs of facing a false criminal case under U/S. These days, awareness of women about gender-biased laws in India has enormously increased, partly due to the movies, and men do not need any special signs to know that they and others in his family are going to face false matrimonial litigations. The women are telling in your face that they will hoist a false litigation and send you to jail. This being the sole goal. So listen, observe carefully, such as utterances, and record them. This is evidence safeguarded. Being idiotic, read still believing that the woman will come back to his home and lead a happy marital life in an oasis. Is your choice. अच्छा, being idiotic is your choice. ये लिखना चाहिए था भाई तुझे. Hope you do not regret the decisions later when one or some in your family died due to false litigation. Oh, come on. Okay. ठीक है. So we clearly know इस post की कहाँ पर वो है, क्या है, bias कहाँ पर है इस post का. Filing a false complaint and registration of the FIR. Another must happen is that women hoist the false complaints only at their parental home to leverage the local feelings. Caste, religion, connections will be invoked. There is a bad judgment also now to support them in this. Go find it here. Officer in charge of the station house officer, SHO, assigns an officer of the country inspector to register the FIR and investigate the allegations in the complaint. This person is called the investigation officer. Alright. ये क्या है? रूपाली देव वर्सेस स्टेट. Alright. अच्छा, ये तो पूरा ही वो दे दिया. इसको बाद में देखते हैं. All right. Anticipatory bail under section 438 CRPC. If there are any other serious cognizable offenses in the FIR, check for schedule CRPC book which lists some unique खर्च. क्या हाल है भाई? Please help me, I am confused. क्या हो गया मेरे भाई, बता. IBC offenses along with the details such as if a case is cognizable or bailable, which may attract 7 years or more punishment. Then immediately go for anticipatory bail at sessions court first on failure there. Okay, all right. I just get irritated जब चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं अजीब तरीके से. Failure. Then go to the High Court. Landmark Arnesh Kumar judgment is here. The thing to note here is that once a AB is granted, anticipatory bail is granted in a case FIR. In a case FIR, the protection continues until the end of the trial. All right, landmark case law of Sushila Agarwal is here. Another note is no need to convert AB into regular bail. Do not entertain any nonsense here. All right, okay.
After 12th, what would be a better option, BBA or BCA? क्या तुझे करना क्या भाई? I reside in Indore. BCA is, it's your computer thing, right? क्या है? But BBA is more suitable if you're interested in management, finance, marketing, and or entrepreneurship. On the other hand, BCA is better choice if you want to work in the field of computer science, software development, and information on technology. I think it's simple, yeah. If you're good with computers, go for BCA, because I would. Both are good, I think. Do you have interest in software or business and finances? हाँ, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं, चाहे तेरा BCA हो गया, इफ़ यू आर गुड विद कंप्यूटर्स, ये फील्ड कहीं नहीं जा रही, राइट? इफ़ यू आर गुड विद सॉफ्टवेयर, इस फील्ड कहीं नहीं जा रही. BBA इज मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, मार्केटिंग, ये जा ही नहीं सकती कहीं. तो दोनों फील्ड्स आर गुड इनफ. एंटिसिपेटरी बेल विद इज एनी सीरियस कॉग्निजेबल, ठीक है, हो गया. तो एंटिसिपेटरी बेल ले लो और उसको रेगुलर में करना. ऑलराइट, व्हाट एम आई डूइंग हियर? व्हाई एम आई रीडिंग दिस शिट? ये कुछ खास दे नहीं रहा मुझे. ये मुझे एक वो बता रहा है कि क्या करो. भाई देखो, मैनेजमेंट करना था, बट BCA में स्कोप है, क्योंकि टेक एंड कंप्यूटराइजेशन इज ग्रोइंग रैपिडली. टेक एंड कंप्यूटराइजेशन इज नॉट गोना एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की भी ज़रूरत हमेशा रहेगी, बट every field is good, it just depends on your interest. True. भाई कंप्यूटराइजेशन रैपिडली ग्रो कर रही है, लेकिन people need people to work. People need large amounts of people to work, and large amounts of people need management to work. It depends on your skill set. तू कितना एक्सट्रोवर्टेड है, तू कितना अच्छा है ये मैनेजमेंट जैसे कामों में अपने अंदर से ही. इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ दोज थिंग्स. इसको देख के मुझे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा वैसे. क्या था? 498A, फिर से देखता हूँ. Section 498A makes it a criminal offense for husband and his relatives to subject a married woman to cruelty. All right. आप बताओ, BBA के साथ भी कोई कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, लाइक C++ एंड जावा? हाँ यार, कर सकते हैं. यू आर एन इंट्रोवर्ट, ऑलराइट. आई थिंक दैट यू माइट बी बेटर ऑफ विद कंप्यूटर्स, बट ये डोंट टेक दैट सीरियसली एट ऑल. ये बहुत ही चूते वाली बात करी है मैंने. डोंट टेक दैट सीरियसली एट ऑल, ठीक है? Fuck off. Please fuck off. वो कितने हरामी होते हैं, ऐसी वेबसाइट इतनी घटिया लगती है ना. देन गो फॉर BBA. आँख बंद करके डेवलपमेंट और मैनेजमेंट स्किल्स. टू बी ऑनेस्ट, कमिंग फ्रॉम टेक इंडस्ट्री, नथिंग इन BCA विल गेट यू दैट a 4-week ऑनलाइन स्टडी कैन. Can't, I think you mean, right? Okay, nothing in BCA will get you that a 4-week online study can't, I think. हाँ, बट मेरे ख्याल से वो चीज़ तो हर चीज़ के लिए है. आपका मेडिकल वाला दोस्त कैसा है? यार मेरे सारे दोस्त बढ़िया हैं भाई, बाबा जी की दया से. IPC section 498, husband or relative lodging false case. Let's see what this is. C++ और जावा ही करना है तो BCA ले ले भाई. और हाँ, इस बारे में मेरी बात तो बिल्कुल सुन भाई. वैसे मैं खुद अनपढ़ आदमी यार, तेरे काम बताऊँगा. The Supreme Court has held that है क्या? And the Apex Court was hearing the appeal of a woman who was accused by her newlywed sister-in-law of using foul language and dumping the latter's belongings in the dustbin. Okay. The Apex Court was hearing the appeal of a woman who was accused by her newlywed sister-in-law.
नहीं भाई, चुदी वाली बात नहीं है. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रहा था कि इंट्रोवर्ट शुड टेक BCA, बट आई थिंक कम्प्लीटली गोइंग टुवर्ड्स BCA वुडंट बी दैट बेनिफिशियल देन BBA प्लस अ वेब डेवलपमेंट कोर्स साइड बाय साइड. भाई जितनी स्किल्स एक्वायर कर सकता है ना रिगार्डिंग दीज थिंग्स, वो तो तू कर ही कर. आपका लव रुद्राक्ष ने बहुत फ़ायदा उठाया है. मैंने सुना है था वो आपको पे नहीं करता था. ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे भाई. कहीं पता नहीं कहाँ से सुना तूने, बट ऐसा कभी नहीं हुआ. अगर मुझे वो पे नहीं करता मैं आज तक उसका दोस्त क्यों होता यार. ऐसा नहीं है कि पे करने पे दोस्ती डिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो मुझे पे नहीं करता तो मैं उसको ट्रस्ट कैसे करता, बीइंग माई फ्रेंड, राइट. तो दैट इज़, जिसने भी बोला है गलत बोला है. The Supreme Court has held that one instance that of bad behavior could not be classified as the harassment or cruelty for dowry under Section 498A of the Indian Penal Code. The instance, unless ये क्या होता है, कैसे शब्द हैं, pretentious, what does this mean? Of or like a portent of moment significance. All right. Fateful, ominous. Yes, Aman bhai, BBA with computer science course is better, I think. It is better. I think so too. वेब डेवलपमेंट करना है तो BBA क्यों? BCA, BSc, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्किल्स कंप्यूटर रिलेटेड हैं तो बेटर है टू हैव अ डिग्री विच इज़ ऑल्सो सिमिलर, विल ओपन रिलेटिवली मोर डोर्स टू यू. हाउएवर आई ऑल्सो थिंक what is your source of income? I make videos every now and then for people who need videos made and they pay me for that. I think we are not that far from that. No, but I wouldn't say that. Because you might take that as an advice and it's not good. Yes, but if you're interested in management, business and finance, then why do you even want to develop your coding skill? Nilesh bhai, BCA mein scope is restricted to tech, but BBA mein is diversified. True. और अगर तू जैसे इंट्रोवर्ट भी कह रहा है ना अपने आपको, इफ़ यू आर नॉट गुड विद दीज थिंग्स, वो स्किल्स तुझे वैसे भी डेवलप करनी ही पड़ेंगी अपने अंदर. यू नीड टू डेवलप दो स्किल्स कि लोगों से कैसे बात करनी, कैसे अथॉरिटी रखनी है, कहाँ पर यू नीड टू टेक अ स्टैंड, कहाँ पर यू डोंट नीड टू टेक अ स्टैंड एट ऑल, कहाँ पर यू नीड टू लिसन टू समवन एल्स, कहाँ पर यू नीड टू बी मोर असर्टिव. डू यू मिस ऐश्वर्या? I don't miss anyone, honestly. I don't understand that question yet. तो जब भी मुझे कोई कहता है, do you miss me? What does that mean? I talk to Aishwarya every now and then. I talk to her very recently. I'll talk to her soon too. So, you know. Yeah. Hold on, guys. Just give me 1 second. अरे यार, I was. All right, guys. Vasaman bhai, I have a question. Aman bhai, taking in mind the trend analysis of technology, I'm going to do that direction side by side, but not fully. Is CUET necessary for everyone? अच्छा मुझे तो पता भी नहीं ये क्या है तो. That's good. Okay, I'm out of this conversation for now. The absence of any material evidence of interfere and involvement in the marital life of the complainant may not be sufficient to implicate the person as having committed cruelty under Section 498A of the IPC. The bench headed by Justice Sanjeev the court was hearing the appeal of a woman from Karnataka who was accused by her newlywed sister-in-law of using foul language and dumping the latter's personal belongings into the dustbin. Section 498A mandates that whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may be extended up to 3 years and shall be liable to fine. Wait, what?
कैन यू एलैबोरेट डाइवर्सिफाइड स्कोप? भाई मोस्ट मैनेजमेंट वाले सेल्स कर रहे हैं फॉर मैनेजमेंट कोर्स ब्रांड ऑफ कॉलेज मैटर्स टू ब्रेक एट गुड लेवल्स टू फाइनेंस ऑपरेशंस. Wait, what does this fucking mean? Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished. But how does that matter? However, the bench found that the accused woman was not even living in the same house as her sister-in-law. In fact, the woman was based abroad. I don't think so is necessary. I am not aware of it. All right. However, the bench found that the court found that the brother's wife had not given any specific details of the cruelty committed on her by the woman. The bench said that the woman's brother had already divorced his wife in 2022. The allegations of sister-in-law against her were very vague and general. Accordingly, we quashed the criminal proceedings against an appellants. However, we clarified that in any material comes on record during the recording of evidence, it will be open to the trial court. All right, this is all right. And General bhai, you are right, but the thing is that we can do anything by doing BBA, MBA. भाई मेरे तो कर ये सारी चीज़ें. At the same time, you cannot do anything if you don't have the skills. You need to figure out what you need to do, and you need to develop skills based on that. Do you like BDSM? Sure, man. Who doesn't, right? I'm not sure if I know what you mean by BDSM actually. मुझे मेरे माइंड में एक आइडिया है. Do you support LGBTQ? I support people living their life the way they want to, as long as they're not imposing it on other people who don't want who don't want to have anything to do with that. Are you going to do MBA afterwards or not? Lodging fouls. All right. Let's see. In new education policy 2021, it is amended a common university entrance test, which is common all over India. It is the entrance exam for colleges. In 2022, around 9 lakh students attempted it. Alright, so basically वही ना SAT इसी तरह जो होते हैं बाहर. And in 2023, 19 lakh. Also another point, Harsh, please trend के पीछे मत भाग. Do what has your interest. You can earn in whatsoever field जब तक you enjoy the process. Nilesh, what's your opinion? I think so, yes. I think so. I think you really need to develop your skill set. I think in the long term, your skill set will matter much more than your degree. हो सकता है the best thing a degree can do is get you in an office. एक अच्छी कंपनी के ऑफिस में. That's the best it can do. So substantial growth is more than 100%. Alright, General bhai, yes, gonna do MBA. What is the reason of your the failure of togetherness? You shoot it, you can answer it well. I don't think it failed. I don't think there was much expectation. At least मेरे mind में तो नहीं थी. So yeah, I was hired to a job and I did my job. So so Dental bhai, I can do BCA then MBA. तो ये देखना सिंपल सी बात है हर्ष, तो कितने लोगों से भाई विदित भाई अलग ही चल रहे मस्त अरे उसको अलग बात में लगाओ चले. तो देख लेना, डू यू थिंक यू कैन बी बेटर एट सेल्स देन यू कैन बी एट कंप्यूटर्स. मैंने बीटेक की है, हैव सीन पीपल जिनका इंटरेस्ट ही नहीं बैठता कोडिंग में, फिर वो अलग अलग जॉब लगाने की सोचते हैं.
I too really quickly switched to management after entering the industry. So just follow your interest. Plus, if I'm not wrong, Aman, please correct me if I'm wrong. I'm probably wrong, but coding is a lot of problem solving, is it not? So I think जिस टाइप का ब्रेन तुम्हारा मैथ्स में लगता है उस टाइप का ब्रेन काफ़ी हद तक कोडिंग में भी लगता है. Unless I'm completely wrong about this, please Aman, let me know. So if you're good at that, Aman, Harsh, so maybe you're better off with that. If you're not, then maybe you're better off with people. You need to figure out. अगर ये चीज़ सही है तो you need to figure out if you're better off working with people or you're better off problem solving mathematical problems or coding type of problems on yourself. But you are better at. Yes, it is. All right. Yes, Aman bhai, BBA, MBA करूँगा साथ में कोई कोर्स C++ और Java just for knowledge and skills. It will help me. The Calcutta High Court has recently held that a wife making false allegations against her husband and his family members under Section 498A of this IPC would constitute an element of the offence of the cruelty, which is a ground for dissolution of marriage under the Hindu Marriage Act, HMA. In allowing the husband's plea of dissolution of marriage, a division bench of this. All right, what does this mean? Please tell me. But I think coding is really needed at this time. So sideline, I can do it. Management and sales is also still needed very much, right? देख अगर तू कोई भी डिग्री ले ले दोनों में से, अगर तेरा गोल है ना कि तुझे एंड में करोड़पति अरबपति बनना है, इन दोनों डिग्री में से तेरी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली, इवन दो चाहे तू काम इन्हीं फील्ड्स में कर तब भी. क्योंकि हेल्प करती हैं स्किल्स. The Calcutta High Court has called for an explanation from a group of doctors who medically terminated the minor petitioner's pregnancy when the court had only directed the formation of a medical board to assertion of the pros and cons of the terminating the pregnancy. All right. Harsh, to be honest, coding कोई भी sideline में नहीं कर सकता. If you want to do it, you have to give it your heart into it. All right. मैं domain focused would be on only on management. अच्छा, अब यहाँ पर भी अमन एंड बाकी की चैट कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एंड प्लीज़ ये मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन जब मैं नहीं भी बोल रहा हूँ, ऑलवेज गाइस फील मोर फ्री टू डू दैट. बाय सेल्स वर्क एनवायरनमेंट इन इंडिया इज़ वेरी टॉक्सिक इन जनरल. यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु यू नो एंड इज़ वर्किंग इन सेल्स. ट्रू. हाउ एंड ऑल्सो आई वुड से आपको कभी नेगेटिव कमेंट मिलती है क्या भाई? हमेशा, मतलब ऑल द टाइम. एनीवेज, हमेशा एक तो होता है, कहीं ना कहीं तो मिल जाता है मुझे कुछ ना कुछ. एंड दैट्स बिकॉज आई एम नॉट पॉपुलर. इफ आई वॉज पॉपुलर तब तो बहुत ज़्यादा मिलता है. हर्ष, एक चीज़ और, आई नो भाई व्हाट यू आर सेइंग, बट ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती है एंड उतना पैसा नहीं है ब्रो. नहीं, बट दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. आई एम सेइंग इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन एनी फील्ड, मैंने पैसा एज अ मेटाफोर बोल दिया, मेरी गलती है. इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन एनी फील्ड तो वो डिग्री से हेल्प नहीं करेंगी. अगर मैनेजमेंट ही करनी है, कोडिंग भूल जा अभी के लिए. आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बाय यू, BBA कर एंड देन गो फॉर MBA. एंड इफ यू वांट टू एक्सेल इन दैट फील्ड, here's what I think, and chat, hold me accountable. If you go in the coding line, right, so that's all you need to get into. Coding, अलग अलग तरीके की coding, whatever that is, right? That's all you need to get into. But if you want to go into the management side, then you need to learn a lot about sociology, management और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा. I think तो अलग अलग जगहों से अगर information उठानी पड़ेगी ज़्यादा, तो I think you'll have to do that इन मैनेजमेंट और इन सेल्स, इन सब चीज़ों में. क्योंकि जो तेरी पढ़ाई है, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गोना बी इनफ इन बोथ केसेस. बट आई थिंक, आई वुड अज्यूम जो कोडिंग की लर्निंग है, दैट इज़ मोर लिनियर. उसके बाद तुम अपना दिमाग लगाओगे, वो तो चीज़ अलग ही है. हाउएवर, मेरे ख्याल से इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों में, देन यू नीड अ प्लेथरा. मतलब यू नीड अलग अलग जगहों से, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ
information, a lot of knowledge. Yes, Aman bhai, thanks for the guidance, and I think this is the best option. There you go, Aman. All right, man. Aman, तूने किसी का दिन बना दिया. पैसा कहाँ है ज़्यादा, मैनेजमेंट और टेक, जहाँ तुम ज़्यादा एक्सेल करो. That's what I would assume. The single bench of Justice Sabyasachi Bhattacharya held such action on the part of the concerned doctors transpires prima facie to be an overaction, since the court had not permitted. In terms of the concerned issue, ये मैं कुछ और ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ से आ गई बात? I wanted to read something else. Okay, we don't have any good shit to read now. I could sell a single bench as well. All right, fuck off. I have interest in financial management. All right. I don't know what you can. How to overcome feet fetish? Why do you need to overcome that? यार ठीक है, अगर है तो चले, क्या हो गया? Do negative comments affect you? Not much. And once again, if you have a feet fetish, it's fine, man. क्या दिक्कत है? Nilesh bhai, any views on Poonam Pandey? She's alive. She has a lot of views. I don't need to give any views on her. अरे ठीक है, चले. उसको करना था, कर दिया. But I'm not buying that कि moral act. कि देखो मैं कितनी अच्छी, मैं तो cancer के लिए वो कर रही हूँ. No, you just need attention. That's all. That's why your website is poonampandeyisalive.com. It's not related to cervical cancer at all. Poonam Pandey भरी हुई है website में भी. That's just narcissistic behavior. Fight against the misuse of dowry law. Just to add on, coding requires study plus experience, but management requires sheer experience. I studied a little about management in BTech, even after 1 year of management experience now. Is it normal to have feet fetish? मेरे भाई नॉर्मल से फ़र्क क्या पड़ता है? यू आर यू. देख एक बात बताता हूँ, होल्ड ऑन ब्रो. मेरे को कल पता चला ये कौन है. आई डिडंट नो हर बिफोर. किसी बात कर रहा है? I can say managing improves with experience rather than just theoretical study. True. With it, मेरे भाई सुन. People will hate me. Alright. पता है मेडिकल इंडस्ट्री कैसे काम करती है? एक तुमने सुना होगा ना, 2000 कैलोरीज पर डे अच्छी होती है लेने की. तो उन्होंने क्या करा, विद इट आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू यू. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हज़ारों लोगों से पूछा जो कि एक हेल्दी BMI रेंज में थे कि तुम कितनी कैलोरीज लेते हो. तो उन्होंने नंबर निकाला X. ना मान ले 1000 लोगों से पूछा था, तो 1000 को डिवाइड, ठीक है, तुम कितनी कैलोरीज लेते हो. किसी ने कुछ बोली होगी, किसी ने कोई अमाउंट बोला होगा, किसी ने कोई अमाउंट, किसी ने कोई, सब ने अलग अलग अमाउंट बोले होंगे कि मैं इतनी कैलोरीज लेता हूँ, इतनी लेता हूँ. उन्होंने उन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, तो उनके पास एक नंबर आ गया X. अब 1000 लोगों की टोटल कैलोरीज इनटेक पर डे होता है X को डिवाइड कर दिया उन्होंने, कहाँ है मेरा कर्सर? ओके, X को डिवाइड कर दिया उन्होंने बाय 1000. क्यों? क्योंकि 1000 लोगों से पूछा था. तो यू गेट एन एवरेज, राइट? सो नाउ दिस इज़ नॉर्मल. तो इसलिए तुम्हें मेडिकल साइंस आगे कह देती है भाई 2000 kcal इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर द एवरेज मैन. सच्चाई ये, जिन पे ये स्टडी भी हुई है उनमें भी कोई ले रहा है 2500, कोई ले रहा है 1500, कोई ले रहा है 2900, कोई ले रहा है 1900. वी आर इंडिविजुअल्स. बट नॉर्मल के लिए तो ये परफेक्ट है, बट इट डजंट मीन दिस इज परफेक्ट फॉर यू. इफ यू आर इनटू फीट फेटिश, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इफ इट्स नॉर्मल और नॉट. मे बी नॉर्मल इज नॉट गुड फॉर यू. मे बी दिस इज नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो कॉमन है. बेसिकली दैट्स व्हाट यू मीन, राइट? इफ इट्स कॉमन और नॉट. आई डोंट थिंक इट्स अनहेल्दी जब तक तो कुछ किसी कंसेंटिंग एडल्ट के साथ कुछ कर रहा है तो, राइट? इट्स नॉट अनहेल्दी. I can say managing improves both experience rather than just theoretical study. Surely अमन, आप कंसल्टेंट बन जाओ यार. अरे पूनम की बात कर रहा हूँ. आपको BMI कितनी है? आपकी BMI कितनी है? मेरी है 23.4. एंड हाउ मेनी स्टेप्स डू यू वॉक इन अ डे? आई डोंट नो मैं एक दिन में कितने स्टेप्स चलता हूँ. मेरी BMI शायद आई गेस 24 के आसपास ही होगी अब तो. मेरा वेट अभी देखा था मैंने. ऑलराइट, BMI कैलकुलेटर. Do you guys like the background music or not? Thank you so much.
with it, don't worry, man. It's all good. You don't need to be ashamed of it. हाइट इन सेंटीमीटर्स. मेरी हाइट कितनी है? 5'11" लगा लेता हूँ. मुझे ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया. 180. ऑलराइट. 180. Weight is about 87 now. Compute BMI 26 point. Holy fucking shit! Oh my god! I'm getting fat, guys. I'm getting extremely fat. It's all muscle, motherfucker. My weight is 84 kg and my height is 6'2". Alright. मेरा 27 है BMI. By the way, even BMI. See, ये सारी science is a little deceiving. Do you like the singing of Pragati? Pragati मैंने गाने इतने सुने नहीं honestly. Unhealthy और normal अलग अलग क्राइटेरियाज में रख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जो नॉर्मल है वो अनहेल्दी ही है. एग्जैक्टली. नीलेश भाई, यू आर ओवरवेट. यस आई एम. देख, ये मैं बताना चाह रहा हूँ. सो BMI इज ऑल्सो डिसीविंग. बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट ओवरवेट. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा मैं हेल्दी हूँ. आई एम नॉट. आई एम ओवरवेट. ठीक है, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट. डोंट वरी. हाउएवर, सो देयर आर टू थिंग्स, राइट? देयर इज योर BMI. अब BMI क्या है? BMI is concerned with two things. कहाँ गया? Two things. BMI is concerned with your height. It is concerned with your weight. Right? अब now this, क्या ये दोनों चीज़ें ही important हैं to determine someone's fitness? Of course not. क्यों? Because जो तुम्हारा weight है is not just your weight. Weight is not just weight. ढंग से पढ़ो यार. क्या गलत पढ़ा मैंने? Unhealthy और normal अलग अलग क्राइटेरियाज में नहीं रख सकते. ज़रूरी नहीं जो नॉर्मल है वो अनहेल्दी नहीं है. ज़रूरी नहीं जो नॉर्मल है वो अनहेल्दी नहीं है. अब तो मैं समझ ही नहीं पाया ढंग से पढ़ने की कोशिश करी तो. अनहेल्दी और नॉर्मल अलग अलग क्राइटेरियाज में नहीं रख सकते. व्हाई नॉट? आई थिंक रख सकते हैं डेफिनेटली. अनहेल्दी नहीं है, अनहेल्दी नहीं लिखा है अमन भाई ने. ज़रूरी नहीं जो नॉर्मल है वो अनहेल्दी नहीं है. Hold on. ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अटक गई यहाँ से. अनहेल्दी और नॉर्मल अलग अलग क्राइटेरियाज में नहीं रख सकते. क्यों? ज़रूरी नहीं जो नॉर्मल है वो अनहेल्दी नहीं है. दिस इज़ वियर्डली फ्रेज्ड अमन. मैं सच में या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. सी, ऑलराइट, बट बिफोर लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद दैट. और ऑल्सो आई चैलेंज योर फर्स्ट स्टेटमेंट कि अलग अलग क्राइटेरियाज में क्यों नहीं रख सकते नॉर्मल और अनहेल्दी को. नो, वेट इज़ नॉट वेट. वेट इज़ में बहुत सारी चीज़ होती हैं. वेट में तुम्हारी बॉडी का वाटर वेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तुम्हारी बॉडी की बोन का वेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तुम्हारे मसल्स का वेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तुम्हारे फैट का वेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तुम्हारे कार्ब्स का वेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें आती हैं वेट में. ठीक है. अरे मतलब जिसका BMI नॉर्मल हो वो भी अनहेल्दी हो सकता है. अच्छा यार, मैं विदित के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश कर रहा था उसको. जस्ट फॉर इंस्टेंस, स्मोकिंग इज़ नॉर्मल बट अनहेल्दी. येस, लेकिन बट यू आर सेइंग कि ज़रूरी नहीं है जो नॉर्मल हो वो अनहेल्दी नहीं है. आई नो दैट, बट मैं तो वो केस बना भी नहीं रहा. द केस आई एम मेकिंग इज़ कि ज़रूरी नहीं है जो नॉर्मल है वो हेल्दी है. राइट? तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, उनको अलग अलग क्राइटेरिया में रख सकते हैं. मेक सेंस? सो BMI की बात करते हैं. योर हाइट इज़ जस्ट योर हाइट, राइट? सो दैट इज़ वन मेजरमेंट, तुम्हारी हाइट. जो वेट है, वेट इज़ अ कंबाइंड मेजरमेंट ऑफ एटलीस्ट दीज थिंग्स. मुझे नहीं पता और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं या नहीं होती. तो किसी का इसमें रेशियो मसल का ज़्यादा हो, किसी का फैट का ज़्यादा हो, किसी का कार्ब्स का ज़्यादा हो, किसी का बोन डेंसिटी कम हो, किसी का वाटर वेट ज़्यादा हो. तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको BMI सॉल्व नहीं कर सकती. सेंटेंस फ्रेमिंग इज़ कन्फ्यूजिंग. ट्रू. तो इन सारी इसको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू वेट, द मल्टी फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेट, वो BMI नहीं करता. तो दैट्स वाई BMI कैन नॉट बी अ गुड मेजर ऑफ हेल्थ. माई हाइट इज़ माई हाइट, नन ऑफ योर हाइट. आई एम सॉरी मैन, आई एम सॉरी. बट हाँ, मैं तो अनहेल्दी हूँ, सो डोंट वरी.
मुझे माफ करो सर. Legal strategies to deny maintenance of wife. Oh, shit. I know तुमको लग रहा है मैंने लिटरली जान के करा, बट मैंने सच में जान के नहीं करता. You know which is the most dangerous shark in the world? The great white shark. क्या कौन सी होती है? Yes, I was right. The great white shark. That's what Google says. Oh shit, sit हो गया. Sit हो गया, sit. चैट उड़ गई थी. अब आ गई क्या? नहीं आई. अभी भी नहीं आई. Sit ख़त्म ही नहीं हो रहा. एक सेकंड रुक दो गए, रुक दो. अभी sit ख़त्म करते हैं. अब sit ठीक हो गया कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ. Oh fuck me. I cannot get it to work. Hold on guys, मैं चैट उड़ा दी गलती से. Gotcha bitch. The answer is Ashneer Karoor. Yeah, BMI can be deceiving. My BMI is more than it should be due to my huge. ये तूने कैसे लिखा काट के? भैंस की आँख. That's what I'm wondering. ये पैसे ले लेते हैं, खेलने नहीं देते गेम फिर. Fuck off. The answer is Ashneer Karoor. हेलो दोस्तों, अननोन आर्टिस्ट, क्या हाल है? क्या नाम है आपका अननोन आर्टिस्ट? मैंने तेरा कमेंट देखा अपने चैनल पे पहले, बट आई थिंक इज दिस द फर्स्ट टाइम यूर जॉइनिंग लाइव? ऐसे लिखा है. ओके. नहीं यार, उसने मसल्स पूरा ही काट रखा है, पता नहीं कैसे. बता भी नहीं रहा जेंटल. नीलेश ब्रो, हैव यू हर्ड एवर हैड कॉक एडिक्शन? नहीं यार, आई एम स्ट्रेट most of the times, if you know what I mean. Artista. गोविंद, और मैं कभी कभी आता हूँ भाई, पहली बार नहीं. अच्छा गोविंद यार, मैंने ध्यान नहीं होगा मुझे, जो हमारी लास्ट बात हुई थी तो क्या हुई थी. My bad, bro, Govind. I'm sorry. Don't mind. Just use cutter to strike off the screen. What? Acha, okay. All right, gotcha. But I don't know how do you mean how to do that. भैया एक लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. बताओ ना कैसे बताऊँ उसको. बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल पूछ लिया तुमने तो. कैसे मैं कहूँ उससे. उसका नाम है श्रद्धा कपूर. इन दैट केस आई कैन हेल्प यू. अरे यार, इसको साइड करो. Well, Harsh, you know, if your love, Harsh, is not the kind of love which manifests itself, expresses itself as the
underlying foundation of every fragment of your being, then there's no need to state it. And if your love is the kind of love which manifests itself, expresses itself as the underlying foundation of every fragment of your being, then there's no need to state it. हमारी लास्ट बात जब दो लोग थे लास्ट मंथ तब हुई थी. बिजी रहते हैं यार, सो टाइम मिलता ही आ जाते हैं, वरना वाईटी ओपन नहीं होता. अरे नहीं यार, आई अप्रिशिएट इट अलॉट भाई, थैंक यू. ये नौकरी से छोकरी पे आ गया है. हर्ष इसको श्वेता आपकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करे, वो क्लिप हैंगर पे छोड़ के क्या है. नीलेश भाई ने नया इंग्लिश चैनल कब नीलेश भाई ये नया इंग्लिश चैनल कब खोले आप? अच्छा, मैंने प्यार की बात ज़रा अंग्रेज़ी में कर दी, इसलिए कह रहा तू. अगर तुम्हारा प्यार उस तरीके का प्यार नहीं है जो तुम्हारी क्या अंग्रेज़ी में बोल गया खोपड़ी से बाहर. हाँ, मैं कर रहा था ट्रांसलेट. अगर तुम्हारा प्यार उस तरीके का प्यार नहीं है जो तुम्हारे एक एक अण में, जो तुम्हारे एक एक अंश में से झलके, तो क्या ज़रूरत उस प्यार के बारे में बताने की. और अगर तुम्हारा प्यार वो प्यार है जो तुम्हारे एक एक अंश में से झलके, तो क्या ज़रूरत उस प्यार को बताने की. दो इलीगल, isn't pedophilia a fetish too? It is, yes. बट उसमें फिर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स नहीं होते ना, दैट्स द थिंग. I'm back. I'm sorry. बफर, हाँ यार सॉरी, थोड़ा सा हगास हो गई थी. ये जब झलकेगा और इज इट सेक्सुअल प्रेफरेंस, ये पुनीत लौट के. अरे तो इतनी देर से मैं बैठा था, मुझे लग रहा था तब से इतनी चैट आने रही थी, अचानक से कहाँ से आने लग गई. एक मिनट रुको, मैं जस्ट कैमरा ऑन कर लूँ. ये भी मेरे पास HDMI केबल नहीं पड़ी है कैमरा की, तो मैं इसे ना जुगाड़ से चलाता हूँ इसको. इट्स नॉट द बेस्ट बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट. एक सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेकेंड एंड गुड, वी गुड. यस, हर्ष वर्मा, क्या हाल है? ऑलराइट गाइस, क्या चैट मिस करी मैंने. झलके एक सेकेंड, क्या अंग्रेजी में बोल गया? हाँ, ये था ना. ये पुनीत लॉट की ऑडियंस कहाँ से आ गई अभी? हाँ हैं, अच्छा एक सेकेंड, ये लाइव चैट पे करूँ पहले तो. दो इलीगल, अच्छा इस बात पे गए. और इज़ इट अ सेक्सुअल प्रेफरेंस? झलकेगा भाई, झलकेगा नीचे वाले से जहाँ से अंश. ओके, ये जब कोई प्यार की बात हिंदी में करता है तो उसके अंदर से सस्ते शाहरुख खान की आत्मा कैसे आ रही है. बफर, कसम से अमन भाई. स्ट्रीम एंड नीलेश भाई, क्या ही प्रॉब्लम आती रहती है आपको? अरे कहाँ ख़त्म हुई स्ट्रीम? यूज्ड टू सी योर चैनल ईयर्स अगो. थैंक यू मैन हर्ष, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड ब्रदर. वर्मा जी, तब से तो चैनल है भी जी हैं, आप फ्यूचर से तो नहीं आए? अरे नहीं भाई, व्हेन देयर वाज अ ग्रुप ऑफ योर्स विद लव, आई थिंक. हाँ, इट वाज 6-7 साल हो गए हैं हर्ष. यस, वाज इट ड्यू टू द वर्ड आई यूज्ड? नो, इट वाजंट, वो मेरी गलती थी. अमन भाई, 3 साल हुए हैं इस चैनल को, पहले का मुझे नहीं पता. यार पहले जो चैनल था वो हैक हो गया था और डिलीट हो गया था. की फ़र्क पैंदा है. वैसे तो वी कैन एंड द स्ट्रीम नाउ. इज देयर समथिंग एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट, या फिर कोई चीज़ जो इंटरेस्टिंग लगी हो तुमका. नाइट चेंजेस, वन डायरेक्शन कवर. Let's see if I have something to watch. Norm, spirituality, analyzing, watch together on live. मैं तो अभी महीनों से ही जानता हूँ भाई को. भाई वेबसाइट है क्या आप कोई आपकी? पहले थी, अभी नहीं है. आई डोंट. ओ शायद आपकी वीडियो मैंने ये रखी थी, मुझे देखी थी तो मैंने रखी थी. एंड्रू टेट. एंड दिस इज़ एन अप्रिसिएशन ऑफ श्वेताब. एंड श्योर मैन, why Shwetab Gangwar is 100 times better than Andrew Tate. Now 100 times better से जो इसने लिखा है ना, 100 times better, यहाँ से क्लियरली लगता है कि हाँ, he is just an extreme Shwetab fan. And I'm not sure if this video is going to be very
लॉजिकल और रैशनल, इवन तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर चीज़ लॉजिकल रैशनल होनी चाहिए, लेकिन 100 टाइम्स बेटर इज़ सॉर्ट ऑफ पोएटिक स्पीच. मैं 10th क्लास में था, तब से देखा था. अरे मेरे भैंस की आँख. अमन भाई 3 साल हुए हैं इस चैनल को. मैं तो अभी कुछ महीने से जानता हूँ भाई. वेबसाइट नहीं. अमन भाई अब कौन से ईयर में? डू लाइक द वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट चेंजेस? आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ यार. हर्ष बीटेक कर ली, अब तो 2 साल जॉब में हो गए हैं ऑलमोस्ट. अरे नाइस यार, नाइस. को ऑलमोस्ट तुम सब लोग जानते होंगे, बट इफ यू रियली डोंट नो हु दिस गाय इज, यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई दिस मैन राइट हियर इज 100 टाइम्स बेटर देन एंड्रयू टेट. It's extremely clickbaity, and fine, you have a new channel and of course you should, right? But क्योंकि अदरवाइज इसमें एंड्रू टेट का कोई पॉइंट ही नहीं है ना इस वीडियो में डालने का. जो भी पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, एंड जो भी मेरे ओपिनियंस होंगे, आई डोंट नो वो कितने रिलेवेंट एंड सेंसिबल होंगे फॉर द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, बट भारत के लिए एंड भारत के लोगों के लिए दे आर रियली इंपॉर्टेंट, लॉजिकली, मोरली एंड एथिकली. लॉजिक शुड बी द सेम, चाहे कोई इंडिया में हो, भारत में हो, चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे कोई युगांडा में हो. लॉन्ग जर्नी लिलेश, लॉन्ग जर्नी इंडीड माय ब्रदर. ओके. अमन अरोड़ा, नीलेश भाई ऐसे ही थे पहले भी. चीजों को बहुत ही सिंपल करके समझने के लिए बाकी सब छोड़ के अगर इन दोनों के काम को देखा जाए कि ये दोनों क्यों फेमस हैं, तो जो कॉमन रीजन निकल के आता है दैट इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन. एंड ऑब्वियसली सॉल्यूशन वहीं पे होती है जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है. तो जब तुम इंटरनेट पे किसी दूसरे इंसान को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए देखते हो, तो वहाँ तुम सिर्फ वो सॉल्यूशन को ही नहीं बल्कि साथ में ही उस इंसान के पर्सपेक्टिव या थॉट प्रोसेस को भी कंज्यूम कर रहे हो. अभी आपने बोला ना नाइट चेंजेस वन डायरेक्शन सॉन्ग. अच्छा, मैंने सुना ही नहीं यार वो गाना. वो तो मैंने वो लिखा हुआ आया था, मैंने इसलिए पढ़ लिया. के नजरिए से चीजों को देख रहे हो, और तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि सामने वाला इंसान A little more fun, a little more pretentious, brother. किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है. क्या वो प्रॉब्लम लेजिटिमेट है? क्या वो प्रॉब्लम उतना बड़ा है जितना दिखाया जा रहा है? क्या उसका सॉल्यूशन वो है जो बताया जा रहा है? क्या वो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सराउंडिंग और रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? एंड अब बात करते हैं इन लोगों के बारे में एंड द प्रॉब्लम्स दे टॉक अबाउट. बोथ एंड्रू टेट एंड श्वेता गंगवार बात करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, मैस्कुलिनिटी, जेंडर्स, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, गोल्स, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, लाइफ, The vlog with dogs and friends. स्टाइल, हेल्थ एंड तेजस, व्हाट्स अप, क्या हाल है मेरे भाई? एवरीथिंग दैट कैन हेल्प यू टू बी अ वर्मा जी, क्या मतलब अब फन नहीं है? दो जवाब दो अमन जी. बेटर इंडिविजुअल. बट द थिंग इज, ये इंसान उस टाइम से इन सब के बारे में बात करते आ रहा है जब एंड्रू टेट इंटरनेट पे था भी नहीं. एंड एंड्रू टेट मोस्टली किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है? Because she is fucking people she shouldn't be fucking. There's no way she is sleeping with endless men, and all of them are either high value men or treating her the way she should be treated. You see what I'm talking about? कि ये सारे No, I don't see what you're talking about. प्रॉब्लम्स भारत के प्रॉब्लम्स है ही नहीं. एंड बिफोर यू गेट मी रॉन्ग, लेट मी क्लैरिफाई दैट ये सब प्रॉब्लम्स भारत के प्रॉब्लम्स है ही नहीं उस लेवल में जिसमें एंड्रू टेट बात करता है. वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सारे प्रॉब्लम्स एक बहुत ही डिफरेंट शेड में एग्जिस्ट करते हैं, एंड भारत में एक बहुत ही अलग शेड में. क्योंकि पर्सन टू पर्सन जैसे हमारे आइडियोलॉजीज अलग होती हैं, वैसे एज ए कलेक्टिव सोसाइटी हमारे वैल्यूज भी डिफरेंट होते हैं. तुम सिंपली उस जगह के कल्चरल डायनामिक्स को एज अ रेफरेंस लेके यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और करोगे भी तो उसके दो रिजल्ट्स निकलेंगे. एंडलेस डिबेट्स जिससे एक्चुअली में टाइम वेस्ट होता है, या एक नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहे फिर वो असली में प्रॉब्लम बन जाती है. क्योंकि Okay, this is a good enough point. लेकिन इससे जस्ट पहले उसने बोला कि श्वेता भी बात बहुत पहले से कर रहा है. What does that have to do with anything? तो क्यों हुआ पहले थी तो. I'm a SEO and advertiser as a freelancer since 1 year. So if you have anything or anyone to prefer, फ़ायदा ही होगा यार. I give best ROI on low budget. Point to be noted. All right, man. हाँ, now I can remember हमारी ऐसे बारे में बात हुई थी ना शायद पहले. We grew up with time, Harsh. I just grew up. Nilesh bhai has become more logical or illogical. अरे illogic. I don't like the word logical now, all of a sudden. क्योंकि लॉजिकल ना ऐसा लगता है सुनने में इट्स द एंड ऑल के, मतलब हाँ भाई वो लॉजिक आ गया बंदे को. लॉजिक इज़ नॉट द ओनली थिंग. लॉजिक इज़ नॉट इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई डोंट थिंक इट इज. हाउएवर जो ये बंदा बात कर रहा है, ये बंदा बिल्कुल सही बात कर रहा है कि अलग अलग कल्चरल नॉर्म्स होते हैं इवन, बट देयर इज एन इशू, देयर इज स्टिल एन इशू, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वर्ल्ड इज़ नाउ सुपर कनेक्टेड, एंड जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो काफ़ी जगहों के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते जा रहे हैं साथ के साथ. You talk about it so much that people start believing it, and then it becomes a reality, which is really dangerous. अब इस आदमी के चैनल पे जाओ एंड ये सब में से किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस निकाल के अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड ट्राई करो रिलेट करने का विद यू एंड योर सराउंडिंग्स. आई बेट तुम इससे जरूर कनेक्ट करोगे, एंड साथ में यू विल फाइंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वैल्यूज विदाउट एनी बुलशिट. जहाँ पे ये बंदा तुम्हारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में डीप डाइव करके लेयर बाय लेयर उसको समझता है एंड तुम्हें रोक टोक बताता है. एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में जानना है तो तुम श्वेता के ये वाले वीडियोस को देखो एंड नोटिस करो कि कैसे वो तुम्हारे उस सिचुएशन के थॉट्स को डिटेल्ड वे में समझ के तुम्हें प्रॉब्लम की जड़ बताने में लगा हुआ है. और फिर भी एंड्रू टेट मोस्ट गूगल्ड पर्सन ऑन द प्लैनेट है. क्यों?
is this guy being serious? How are these things even relate? What is he talking? This video even a topic to discuss? वही मैं नहीं. Alright, because this is so full of inconsistencies. पहली बात तो I am not a big fan of Andrew Tate, right? लेकिन पहली बात तो ये बंदा है Andrew Tate की एक स्टेटमेंट दिखाता है एंड श्वेताब की 4 या 5 वीडियोस लिंक करता है. यू नो, बिकॉज वो एंड्रू टेट की एक स्टेटमेंट दिखाता है. देखो एंड्रू टेट तो ऐसी बात करता है, श्वेताब की देख की बात समझ नहीं है तो कितनी श्वेताब बहुत अच्छी बातें करता है और ये 4 वीडियोस देख लो जाके. हाउ इज दैट फेयर? एंड देन ही सेज कि फिर ये एंड्रू टेट गूगल पे टॉप पे क्यों है? व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मॉरल ग्रे. What is a morally grey person? Morally grey वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एज प्योर गुड और प्योर इवल. उन लोगों का सेंस ऑफ that's everyone, by the way. That's everyone. गुड और बैड कंप्लीटली अलग होता है. वो बस देखते हैं वो चीजें जो वो पाना चाहते हैं लाइफ में, एंड नथिंग इज गुड और बैड नेसेसरीली टू गेट टू दैट स्टेज. एंड वेट व्हाट? अब हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं. ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बंदे को एंड्रू टेट का नाम डालना था, श्वेताब और श्वेताब को प्रेस करना था. एंड्रू टेट का नाम डाल के चीज़ें डाल चलती हैं. एंड्रू टेट और श्वेताब समवट सिमिलर कैटेगरी में आते हैं बिकॉज वो मैनोस्फेयर वाली बातें करते हैं ज़्यादा. आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू विवेक बिंद्रा फॉर डूइंग अ स्कैम एंड संदीप फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, डिफेंडिंग अक्यूज स्टूडेंट्स, सो दैट योर लाइव स्ट्रीम केम टू मी एंड नाउ आई केम टू योर लाइव स्ट्रीम. आई अप्रिशिएट कि तू आता है मेरी लाइव स्ट्रीम में, बट मैं विवेक को थैंक्स तो शायद नहीं करूँगा स्कैम करने के लिए अगर उसने करा, विच इज प्रॉब्ली उसने करा. बट हाँ, एंड्रू टेट इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है. एंड्रू टेट बहुत बातें करता है अबाउट बीइंग रिच, गेटिंग मनी, लिविंग अ लैविश लाइफ, एंड वो ये भी बात करता है हाउ टू बी अ गुड पर्सन, हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड हाउ टू सी पीपल एंड वैल्यू पीपल इक्वली. बट उसने खुद ही एडमिट किया है कि उसने स्टार्टिंग डेज में सबसे ज्यादा पैसे कैम गर्ल्स के थ्रू इनकम किए हैं. अब इसको तुम दोगलापन या हिपोक्रेसी कुछ भी बोल सकते हो, बट दिस इज मॉरली ग्रे, व्हिच मींस उसका गोल था पैसे कमाना, एंड वो अचीव करने के लिए इसमें सही और गलत कुछ था ही नहीं. हिज ओनली रियलिटी वाज मनी. नहीं, तुम एक चीज़ को पकड़ के बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हो. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. उसका गोल था पैसे कमाना. उसने एक चीज़ देखी जो मॉरली ग्रे थी, राइट? उसने एक ऐसी चीज़ देखी जो कि मॉरली शायद अच्छी नहीं थी. शायद हो सकता है उसको पता भी हो कि मॉरली चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि एटलीस्ट इतनी बुरी भी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ इस चीज़ के थ्रू बेटर करके निकल सकता हूँ इसमें से. इट्स नॉट कि उसके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ अच्छा है बुरा है मैं तो कर दूंगा. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड्रू टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. आई एम डीपली सैडेंड टू टेल यू दैट हर्ष इज अलाइव. अरे मेरे भाई अच्छा, बिकॉज ऑफ पूनम पांडे. ऑलराइट, आई गॉट अ ब्रो लाइक पर्सन ऑनलाइन. ओह, हाई फाइव. मैंने हाई फाइव की ना, आवाज़ भी वो निकाली पिच, जो होता है ना बॉज्ड हाई फाइव, जो लग भी नहीं पाई. वो 3000 पीपल वॉच दिस. 3000 पीपल ने इसलिए देखी क्योंकि वो श्वेताब और एंड्रू टेट की बात हो रही है ना. बट हाँ, सो यू सी व्हाट ही इज डूइंग. इसने एंड्रू टेट का एक एग्जाम्पल लिया एंड दिस गाय साउंड्स यंग, तो मे बी दैट्स, आई एम नॉट सेइंग कि ये जानबूझ के कुछ गलत कर रहा है. ही साउंड्स यंग, तो मे बी ही जस्ट दैट्स हाउ ही थिंक्स. द थिंग इज कि इस बंदे ने कुछ लिया एक छोटी सी चीज़ और उसका एक्सट्रीम पे लेके चला गया. इसने द ट्रुथ इज एंड्रू टेट ने देखा कि ये चीज़ करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन मुझे भैया बहुत ज़्यादा पैसे कमाने. बट उस चीज़ को इसने बना दिया कि एंड्रू टेट ने देखा सही होगा तो भैंस किया माँ की आँख, मैं तो करूँगा क्योंकि मुझे पैसे कमाना है. दैट्स नॉट एंटायरली द केस, राइट? World champion kickboxer, pimp, mafia associated criminal. Like after all this stuff, and it was like, who is this dude? Like, surely it can't all be true. No, it's not true. I had a fight coming up. The fight was too far away from money, and I needed money today. So I was sitting there thinking, how can I make money? What do I have that's worth money? Like, what do I have that I can even sell? And I was sitting there, and the only thing I had was all these girlfriends. I was sitting there writing down my assets. Like, what do I own? What do I possess? Like, what are these 7 hot chicks? Plus, I'm a master of the game. Long story short, I decided to start with webcam, and I flew all the girls into England. I needed money, man. I need to get paid. I don't have time to be messing around. That's how I made it to the top. That's basically Clickbait, tended speak out. आज हमने 2 देख लिया इस वीडियो में. because I had game. I just ended up in the pimp game, and I built this webcam business. And अब मुझे पता नहीं if you agree with this kind of personality completely, but personally मैं really appreciate करता हूँ people like श्वेताब, जो चाहे कितने भी critical topics या situations ना हो, उसमें अपने opinions को morally और ethically measure करके लोगों तक पहुंचाते हैं. क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारी बातें ही नहीं सुनते कि तुम क्या बोलना चाहते हो, लोग तुमसे कनेक्ट करते हैं ताकि तुम्हारे वैल्यू. Sound Youngs could be an AI voice. They're saying, हाँ true, it's possible. ये वीडियो ही एक clickbait और है. ideologies क्या है वो समझ सके, and that is a huge responsibility. अब बात जहाँ तक पैसे कमाने के बारे में. No, but doesn't sound like AI to me. I'm deeply saddened for Nilesh Jetli that he has only 2K subscribers, being the most sensible. अरे मेरे भाई. वो ही रही है, तो तुम श्वेताब के ये वाले वीडियोस को उठा के देख. Oh my God, ये बार एंड्रू टेट की एक छोटी सी क्लिप दिखाई और कहे श्वेताब की 5 वीडियोस देखो. Even though एंड्रू टेट पूरा टाइम यही रोता रहा कि मेरी लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल दें क्लिप्स. Why would you do the same thing, man? All right.
देख सकते हो। एंड इसमें से कुछ भी इलॉजिकल चीज तुम्हें मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। पर रियल वर्ल्ड में एंड्रू टेट ही ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि मोरली ग्रे इज मोर फन। वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें एक थ्रिल है, उसका यार मोरली ग्रे हम सारे हैं यार, ग्रे एरिया में व्हाट आर यू लॉजिक टॉकिंग सोसाइटी नॉर्म से अलग है, उसमें एक किक है क्योंकि वो स्टोरी डेवलपमेंट में सबसे बेहतर है। एंड एंड्रू टेट एग्जैक्टली वही है, एक स्टोरी। अब ये एक चीज बहुत ही ऑब्वियस फिर भी बहुत ही इग्नोर चीज है। अगर तुम लोगों में से सीरियसली कोई सोचता है कि एंड्रू टेट ठीक वैसे ही है एज अ पर्सन जैसे हमें इंटरनेट पे दिखता है, या फिर वैसे टाइप का एटीट्यूड या वे ऑफ बिहेविंग बहुत ही सही है या कूल है, तो तुम जरा ये वाला वीडियो देखो। Well, we said things in a way that's very abrasive, and we did it on purpose. And the reason we are as famous as we are is because a lot of these videos blew up. So if I were to speak in a very polite way now, I'd say, look, I'm the fucking big boss, and I make all the money. So if I say, bitch, make me a cup of coffee in the morning, you better bring it. And I say things in an abrasive way. They mean the same thing. But if I said it in a more polite way, a lot of people would agree. But it's the fact that we were polarizing. Some people hated us and some people liked us. That's actually the key to our success. दोनों एंड्रू टेट एंड ट्रिस्टन टेट एक कैरेक्टर प्ले करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने को, क्योंकि नॉर्मल वे में एक अच्छा मैसेज इतने लोगों तक उतना इम्पैक्ट के साथ नहीं पहुंचा जा सकता। बट देन मेजर प्रॉब्लम यही तो है, जब तुम एक लार्जर देन लाइफ या एक बहुत ही थ्रिलिंग कैरेक्टर को प्ले करते हो तो तुम इवेंचुअली लोग तुम्हारे मैसेज से जितना नहीं जुड़ते हैं, तुम्हारे कैरेक्टर से उतना ही जुड़ जाते हैं। Vivek is deeply happy because he now has money and control all alone, क्योंकि भी इसने शताब की एंटी सिंपिंग वाली वीडियो नहीं देखी ये बोल के कर रहा है सेटल में ठीक लिखा हुआ है सबटाइटल में है चलो गलती हो सकती है यार कम ऑन मन यार। फिर उनका मैक्सिमम अटेंशन तुम्हारे मैसेज से ज्यादा तुम पे होता है, एंड उस टाइम में तुम्हारे मोरल्स तुम्हारे आर यू सेइंग श्वेताब डज नॉट प्ले अ कैरेक्टर? आर यू टेलिंग मी अगर मैं श्वेताब से मिलने जाऊंगा तो वो सीधा ओ भाई तेरे काम कर रहा अपना नहीं कर रहा? इज दैट द क्लेम? होल्ड ऑन और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन? सबसे चीज हो जाती है कि वो इंसान मेरे साथ है भी नहीं, मेरे से हो सकता है बातें भी नहीं करती हो, मैं अपने मन में ही मादर चोद एक कहानी रट के बैठा हुआ पूरी, और दिन भर उसमें बैठ के मैं फीड करता रहता हूँ और मैं तड़पता रहता हूँ, मैं मरता रहता हूँ। मैं उसको क्या करता हूँ, रीइंफोर्स कैसे करता हूँ, मैं चूतिया नहीं भाई मैंने गलत पढ़ा, सटल नहीं सबटाइटल ही था, मैंने गलत पढ़ा। गाने सुन सुन के कि अगर तू इस्तेमाल करे तुझे पता लगे तो बहुत ही चूतिया चीज है और इससे ना ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बट हियर यू कैन वॉच इट अप किसी भी वीडियो में। और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन, कितना काम कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियोस बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स अभी भी खच्चर वाला ही है। तो ओके ऑब्वियसली द कैरेक्टर इज नॉट दैट प्रोमिनेंट, लेकिन श्वेताब हर वीडियो में ये कैरेक्टर प्ले करता है कि लाइक ही इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी टू टीच यू गाइस समथिंग बेटर। इट इज़ अ कैरेक्टर। जब वो जनरली लोगों से बात करेगा तो इस तरीके से बात नहीं करेगा बिकॉज ही विल जस्ट बी कंसिडर एन एस होल। देन अगर मैं जनरली जाकर श्वेताब से बात करूँगा, श्वेताब मेरे भाई what is something that I probably know like filmmaking. I know more than Shwetab about filmmaking and camera work, right? Shwetab मेरे भाई मैं ना कैमरा कैसे he wouldn't do that to me, right? He's a normal person because that's what normal people do. But when they're making content, they're doing different things. Harsh, you could have passed that mistake with some subtleness. Anyways. आइडियोलॉजीज, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, लैंग्वेज एक्चुअल में लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगती है। एंड जब किसी एक्सट्रीमली पॉपुलर कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होकर लोग 80% ऑफ द टाइम उसको ये सब बातें करते हुए सुनेंगे। That's how I first made my money. And at one point, I had 75 women in 4 locations working for me, which was stressful and the wrong way to do it. I ended up removing my army and going to special forces around 15 people, 15 girls. And me and my brother made a lot of money doing that. How I managed females in those scenarios. How I controlled their emotions. How I convinced them to work and give me most of their money. How I convinced them to share me with other women. Why they obeyed me. तो उनका टांग खींचने में मजा आते हैं। थॉट प्रोसेस भी इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम अर्नब का कोर्स खरीदा था इसने। अर्नब का कौन सा कोर्स है? जगह पे तुम श्वेताब के वीडियोस को उठा के देखो, वो बंदा 6 साल ओ भाई साहब the whole time you're doing the same thing. उन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो तुम आज एंड्रू टेट के मुंह से एक बहुत ही शॉर्ट और ड्रामेटिक वे में सुनते हो। लेकिन श्वेताब को थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिलने के लिए जिसका सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी एंड 2 करोड़ का फेक डिफेमेशन केस लगता है, और वहीं पे एक इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है तुम्हारे देश की हिस्ट्री के बारे में एंड रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे कल्चर के बारे में, हम उसको सर पे बिठाएंगे। Do you think India suffered? Do you think India is in a worse place now than it would have been if it was never colonized by the British? Now, I'm not saying the British didn't kill people. I'm not saying they were completely fair, but also Oh the my world was a different God. place back then. Nowhere was fair. If the British didn't turn up to India in the 1800s, then the Indians would be killing the Indians. People just killed each other. That's how it worked, right? Do you think India would be in a better place today if it was never colonized by them? अर्नब कोर्स का श्वेताब ने अच्छा I mean, they're pooping in the streets right now. What would they be doing if they didn't? The British didn't turn up. I mean, if you look at some of the biggest, best buildings in most of these countries, or some of the most critical infrastructure, it's the shit the British built 200 years ago. अब तुम लोगों का तो पता नहीं, बट टू मी दिस इज एक्सट्रीमली सैड, क्योंकि भाई रूक टॉक बातें सुननी है और अनफिल्टर्ड टू द पॉइंट वाली बातें ही सुननी है। तो एक इंसान सालों से लगा पड़ा है और उसको जितने रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी सालों पहले से, उसका 10% भी आज तक नहीं मिल पाया है। पर हमको लॉजिक, एथिक्स, प्रैक्टिकलिटी इन सब से क्या मिलेगा? हमें तो सबको एक ही सवाल पूछना है ना। What color is your guy? देखो क्या सही है क्या गलत है ये मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, वो तुम अपने हिसाब से खुद यार ये बहुत बेकार वीडियो। आई एग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ही इज सेइंग बट आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली ड्रामेटिक
dramatized version of the points he's trying to make. भाई मैं तो बता रहा हूँ कि कोई कोर्स खरीदना ही है तो इंटर कोर्स खरीदो. Shwetab is far more precious treasure for our generation. I am attack mode user, and it solved my teenage life disturbance. This video is a lot more logical and critical than I thought it would be. Good job. मैं पागल हूँ क्या? मुझे चीज़ें समझ नहीं आती क्या? Like, am I extremely stupid or something? Why the heck are you so underrated? You deserve more subs. Shwetab is a gem. इस क्रिएटर के कागज़ निकालो. Shwetab के चाचा का लड़का है. I used to watch too many self-help YouTubers who sold feel-good positivism with no link to reality. I used to be someone who was very prone to self-blame. When I discovered Shwetab's channel in 2018, he changed my life. Just at the unadult... अच्छा मैं ना कुछ छोड़ो. The unaltered truth. I've always believed that young people look up to guys like this as role models. And also, I believed that this channel would become extremely popular very quickly. However, it saddens me greatly. भाई श्वेताब / अर्नब की वीडियो देख के एंजाइटी एंगर स्पाइक नहीं होता क्या? यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या मैं ही पागल हूँ जिसको समझ नहीं आती चीज़ें, या दुनिया ही पागल है? I don't understand it. क्या मैं पागल हूँ? मैं सच में पूछ रहा हूँ तुझसे. All right. Maybe I could be. Who knows? These are dupe accounts from Shwetab himself. हो सकता है, but I doubt it. मतलब इतना मेहनत कहीं लगाया है श्वेताब इस चीज़ में? हो सकता है लगाया. To be fair. Define the people you remember attend your streams in one word. Interested. Yeah, that's all. और क्या वीडियो नहीं, इस बंदे ने देखो और भी वीडियोस बनाई होंगी अगर ये श्वेताब से रिलेटेड नहीं है तो श्वेताब के अलावा भी. सी ही इज ट्राइंग टू मेक कंटेंट. फेक इंटरनेट हिंदूज, फेक सनातनी. साउंड्स इंटरेस्टिंग. और क्या उम्मीद रख सकते हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीवी ने उनको समानता पता नहीं है. ताजमहल भी उसे भी गिरवा दो, उसकी कमाई खा क्यों हो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे बाप को. लगता है भीख पे किसी ने भीख ली है. मस्जिद में अल्लाह पूजा जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं. तो फिर बाबा जी से छक्का बाप क्यों पूछिए? किसी के भगवान को गलत मत कहना, ये भगवान है भाई. हर दिन हैशटैग हिंदू को लेकर लाखों वीडियो देखते होंगे तुम. मंदिर के सामने जाकर रील्स बना के नाचना, माथे पे तिलक लगा देना और आवाज ऊंचा करके इंटरनेट पे खुद को प्राउड सनातनी बोल देना. इससे गूज़बम्स आ जाते हैं ना. फ्री कंट्री है, सबको आजादी है, जिसको जो मर्जी है वो कर सकता है. पर हम हिंदुओं की नॉन हिंदू से वैलिडेशन लेने वाली आदत अभी तक गई नहीं. डिफाइन द पीपल. अरे इग्नोर कर दिया करो एक वर्ड में डिफाइन. नहीं है. तुम सच बताओ, तुमको लगता है सोचना पड़ेगा फिर तो. बैकग्राउंड में आरएम है प्रचंड जैसे गाने पे एडिट के रील्स डाल के तुमको कुछ कूल दिखता है या फिर कुछ प्रूफ भी होता है इससे? कितने हिंदू हैं हम में से जो असली आर्गुमेंट में बैठ सकते हैं? ये न्यूज़ चैनल के यूजलेस आर्गुमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. ये एकदम फालतू और दो कौड़ी का चीज है. इसको देख के जिसको लग रहा है ना कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, समझ जाओ तुम अपने लाइफ और अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हो. आर्गुमेंट से मेरा मतलब है पहले सिंपल सवाल का जवाब तो देना सीख जाएं. हमारे माँ बाप की उम्र के लोग हमारे धर्म के बारे में मंदिर के बाहर 4 सवाल पूछने पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं. क्यों? हाँ, एक बात इन सबसे अच्छा हो रहा है कि मंदिर जाकर ट्रेडिशनल गेटअप में रील्स डालने से या पूजा करते हुए रील्स डालने से क्या पता कोई दूसरा इंसान देख के शायद एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होकर एक्चुअल सेंस की भक्ति करने लग जाए. ये हो सकता है. पर कितने लोग ऐसे हैं जो रील्स डाल के खुद अपने लाइफ में ये चीज को फॉलो करते हैं? हमारे जनरेशन के धर्म को धर्म और कर्म को कर्मा बनने वाले लोग तो कृष्ण और कृष्णा के बीच में फर्क भी नहीं जानते. What are you trying to do here exactly? Chilling? Right now, yes, chilling. एक नया फैशन जैसे हर दूसरा बंदा लट्टू गोपाल की मूर्ति लिए घूम रहा है, कहीं भी रख देता है, कुछ भी कर रहा है. सब कोई दिखावा कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ. कुछ लोग होंगे जिनके मन में एक्चुअल की भक्ति होगी, दिल से होगी. पर प्लस स्ट्रीम करना पसंद है यार मुझे. 95% लोगों के लिए बस ये भक्ति एक दिखावा है, एक त्याग है. भले ही वो बाल गोपाल रूप में है पर है तो भगवान की मूर्ति ही ना. उनको हर जगह में से 100 पीस जैसे लेके पहले तो नहीं घूमते थे. रील्स का जमाना आते ही इतनी भक्ति आ गई तुम्हारे अंदर. मीरा भाई जैसे भक्ति इनके अंदर तो है नहीं. होती तो कहीं भी मूर्ति रख के रील नहीं बनाते. तो मेरा पॉइंट क्या है? इंटरनेट पे भक्ति ना दिखाएं, अपने धर्म के बारे में बात ना करें, कोई धर्म के बारे में गलत बोले तो आवाज ना उठाएं. नहीं, ये नहीं है मेरा पॉइंट. पॉइंट ये है कि लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी इकोसिस्टम बैठी है उनका प्रोपेगेंडा वाला खबर फैलाने के लिए. प्राण प्रतिष्ठा के बाद मीरा रोड की कांड और अभी ये FTI का मामला, दोनों में हिंदू मुस्लिम और लेफ्टिस्ट सबको इन्वॉल्व है. शायद प्रोवोक भी उन्होंने ही किया था. पर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भगवा रंग पहने हुए लोगों की वीडियो लेके हिंदुत्व टेरर बोल के कवर
और फैलाएंगे। वहाँ लड़ो ना जाके, कैसे इकोसिस्टम बना के, कैसे बनाओगे इकोसिस्टम। ये रील्स और शॉर्ट्स में आराम है प्रचंड वाले एडिट डाल के नहीं, नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक ब्रो। पैसे बनाओ, करोड़पति बनो, अपने मीडिया हाउसेस खुद बनाओ, नहीं तो उनको पैसे फंड करो जो मीडिया हाउसेस ऑलरेडी चला रहे हैं और जो तुम्हारे नैरेटिव को चला सके। पर पैसे नहीं है तो ये दिखावे के चूतिया पे मत करो। तुमको लगता है जब रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अदानी, इलोन मस्क जैसे लोग बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग में बैठते होंगे तो उनको 2 कौड़ी भाई यार अभिषेक ऊपर नहीं देख लो। फर्क पड़ता होगा कौन किस रिलीजन से है। तुम हिंदू मुस्लिम करके रह जाओगे और वोट लेने वाले वोट, पैसे लेने वाले पैसे और लाइक्स लेने वाले लाइक्स लेके चले जाएंगे। एंड में चूतिया Dude, that's पता है मैं मजाक नहीं कर रहा। I'm not मैं फिर से नहीं बोलूँगा, I'm not an Andrew Tate fan, but ये literally same argument मैंने Andrew Tate के मुँह से सुना है. Do you think all those rich people, billionaires, care if someone is white or black on the table? And he's making the same fucking argument. If you want to see something good about someone appreciating Sanatan Dharam, you can watch videos of Akash Gupta. वो मुझे काफ़ी सही लगा. आकाश गुप्ता कौन है देखता हूँ। तुम्हारा ही कटने वाला है। ये बॉलीवुड के दलालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों पहले सरकार किसी और की थी, किसी और धर्म की आवाज ऊंची थी तो उनके यहाँ चाटने पहुंच जाते थे। अभी हैशटैग सनातन का ट्रेंड चल रहा है तो हर बॉलीवुड का चूतिया महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है। ट्रू। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी डू यू गाइस नो व्हाट सनातन धर्म मींस? इट्स वेरी पॉपुलर राइट? आपको लगता है वो बदल गए? तुम्हारी छाती थोड़ी हो जाती है ना। अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पब्लिसिटी दिखे वहाँ चाटने पहुंच जाते हैं ये। और ऐसे लोग श्री राम का किरदार भी निभाएंगे और हम ताली मारेंगे और गूसबम्स आगे बोलेंगे। और ये एक चूतिया 4 पैसे इसके मुंह पे किसी ने फेंक के क्या मार दिए, जीभ निकाल के पाकिस्तान चाटने पहुंच गया। मैं बोल रहा हूँ ना, आखिर में चूतिया तुम्हारा ही बन रहा है। पैसे कमाने वालों को बस पैसे की फिक्र है। इसकी डिलीवरी भी शोताब जैसी होती जा रही है। तो बस इंटरनेट के हिंदू बन के गूसबम्स लेने से अच्छा है ये चूतिया पे छोड़ो। पहले फोकस करो कि अपने धर्म ग्रंथ के बारे में 4 लाइनें पढ़ लो, ताकि तुम्हें कोई सवाल पूछे तो तुम्हारे पास जवाब हो, और कोई गलत आर्गुमेंट दे तो तुम्हारे पास उसके लिए फैक्ट्स हो। नहीं तो दूसरा पैसे कमाने पे फोकस करो, नहीं तो कोई और कमा लेगा। आकाश नेक्स्ट My bad. This guy. All right. देखते हैं। लगाते रह जाओगे। जय सिया राम भाई। जय सिया राम। Misunderstood Ramayan. Author Akshat Gupta on Hinduism के secrets, ancient mysteries and untold Ramayan. All right. Asli Astras explained. महाभारत ended in a minute. इसको तो राज ही रख मेरे भाई। Alright, let's see. क्या देखना चाहिए? ये देखते हैं चलो। नहीं ये देखते हैं चलो। कितनी लंबी है? 45 मिनट्स। डबल स्पीड गाइस, डबल स्पीड। ठीक है फिर डाल दिया एक मीडिया हाउस में विश लिस्ट। Sanatan Dharam is an alternative name for Hinduism in Sanskrit and other Indian languages alongside the more common Hindu Dharma. The term denotes eternal or absolute set of duties. Nice. Religiously ordained practices ये तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, incumbent upon all Hindus regardless of class, castes or छाप दिया विकिपीडिया से। हाँ बस समझ गया मैं। रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज़ क्या लगी? देखिए ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़ी इजीली हम लोग बोलते हैं मोक्ष और सैल्वेशन, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा, काश बचपन लौटा है। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था। क्या जाना है रावण के बारे में अब तक? आज के समय में रावण को जिस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रेल किया जा रहा है उसका, वो करेक्ट नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि रावण और किसी को कभी उठा के नहीं लाए थे, सिर्फ सीता को लाए थे क्योंकि विनाशकारी विपरीत, ये गलत बात है। रावण और बहुत लोगों की युक्तियों उठा लाया। तो ये जो बोलते हैं कि रावण में सब कुछ अच्छा था, महाज्ञानी था और पराक्रमी था, लेकिन बस एक गलती हो नहीं, बस एक गलती थी। रावण ने बहुत सारी गलतियां की थी। रावण के 10 सर जो 10 अलग अलग बातों को दर्शाते हैं, वो 10 के 10 खामियां रावण में थी और वो सडन नहीं आ गई थी। नमस्ते दोस्तों, भारत का कल्चर, भारत की फिलॉसफी और हमारे धर्म के बारे में जानकारी मेरी खुद की एक हॉबी है, जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। आज के गेस्ट हैं अक्षत गुप्ता सर, जिनके साथ एक बढ़िया ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट हम बना चुके हैं। उस पॉडकास्ट का टॉपिक था अस्त्रास, असली अस्त्रास। आज का टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि आज हम सीखेंगे ज़्यादा हमारे धर्म के बारे में। इस इंसान ने डेडिकेट की है अपनी पूरी लाइफ इन सब्जेक्ट्स को, और आज इनके कहानियों के द्वारा हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन अक्षत गुप्ता सर के साथ। एंजॉय कीजिए TRS हिंदी पर। भाई अब बहुत नींद आ रही है। बाय बाय, शुभ रात्रि, राम राम। हाँ यार चलते हैं वैसे, कल देखते हैं, है ना। नींद खैर मुझे आ नहीं रही अभी, बट तुम लोग सो जाकर आराम से। और तू तो छोटा भी है भाई हर्ष, तू जल्दी सो जाएगा भाई। चलो गाइस, सी या, टेक केयर, गुड बाय, ऑलराइट, टेक केयर गाइस, कल मिलते हैं। चलो बाकी मैं डिस्कॉर्ड पे थोड़ा कुछ डालूंगा, तो इफ़ यू गाइस आर ऑन डिस्कॉर्ड ग्रेट, interact with it. If you're not on Discord, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन कर लो। उसके बाद I might put some question or something about the streams. I want to be more active on Discord with you guys. All right, take care guys, see ya, good night, कल मिलते हैं।